Roll number 41. You are there? Yes, sir. कैमरा ओपन रखिए ना सर. Okay, sir. कैमरा ओपन रखिए. कैमरा ओपन ही रखना है अपने को, इनॉग्रल और वैलिडिटी दो टाइम. या Yes, जब भी yes. कोई रिसोर्स पर्सन रिक्वेस्ट करता है. श्रिया जादव मैडम, यू आर देयर? So our respected chief guest, Sahasrabudhe sir has joined. We are just waiting for the honorable director sir to join our cloud meeting. So within a few minutes he will join, and after that we will start our inaugural session. So I welcome Sameer Sahasrabudhe sir. He is Professor of Practice Design, IIT Gandhinagar, Gujarat, and teaching semester courses in visual design and e-learning, and offering MOOC for SWAM and SWAM Prabha, and guiding mentoring students. So welcome sir on behalf of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, a Malviya Mission Teachers Training Center, to this refresher course, which is coordinated by our Honorable Director, Board of Exam and Evaluation and Senior Professor from this university campus, Professor Bharti Gavli ma'am. This is the 12 working days course, a refresher course sponsored by University Grants Commission in the annual schedule to our UGC Malviya Mission Teachers Training Center. And all the participants are the senior college faculty members, those who have completed 5 to 10 years of their service in a senior college traditional courses of BA, BSc, and BCom. When we have taken an introduction, that we have seen that maximum or majority of them are from commerce background, having commerce background, but it is a diverse group in which faculty members from science, social science are equally participating. So I hope that all participants will enjoy this session, and we should be really thankful to our course coordinator Bharti Gavli ma'am that she has spared her valuable time and for preparing the content of this course. And now in the opening session itself, we have Sameer Sahasrabudhe sir from IIT Gandhinagar, Gujarat. Just waiting for a few minutes for the president to arrive in the meeting. After that, we will start our official course, inaugural session. So, Honorable Director, Board of Honorable Director, Professor Satish Patil sir, Senior Professor from Department of Environmental Science of our university, has joined our cloud meeting. He is also Director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada Institute, Chhatrapati Sambhajinagar. So I would now request Gaurav to start the banner and the university song. आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे
जगातही मराठीचे दिवे लख घरोघर. संत महंतांचे विरागी गीत आमुचे वादळाचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे. तंतु तंतु संघर्षाचा पैठणीत भिनलेला. नक्षीतच पक्षी पक्षी विजयाचा विरलेला. सोन पहाट उदयाचे गीत आमुचे उजेडाचे इतिहासाचे जनामनाचे गीत आमुचे जागराचे. प्रज्ञेचा सूर्य नवा शब्द शब्द उजळून गेला. समतेचा संग्राचा अर्थ ढाळून गेला. विराट विशाल संस्कृतीचे गीत आमुचे जीवनाचे इतिहासाचे जनामनाचे गीत आमुचे जागराचे. गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनामनाचे गीत आमुचे जागराचे. Thank you, Goro. You can stop the banner. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, I welcome today's honorable guest, Sameer Sahasrabudhe sir from IIT Gandhinagar. Also, I welcome senior faculty member from this university campus, Director, Board of Exam and Evaluation of our university, Course Coordinator, Professor Bharti Gavli ma'am, Honorable Director of this UGC HRDC, President of this inaugural session, Professor S.S. Patil sir, and all the entire selected participant for this refresher course in Information Communication and Technology. I welcome you all to this 12-day working program which will be held in this UGC Malviya Mission Teachers Training Center, coordinated by Dr. Bharti Gavli ma'am, Senior Professor from School of Computational and Physical Science, Department of Computer Science and Information Technology of our university. A person with a vast teaching and research experience. She has obtained her PhD from our university, same university, and a vast teaching experience of more than 25 years. She has held many academic responsibilities like head Department of Computer Science, then Director, Bajaj Incubation Center of our university, then Coordinator for Avishkar Cell, Coordinator IQAC, then Coordinator for Atal Innovation Mission Niti Aayog, then Chairman of Ad hoc Board of Computer Science, then also member for School Council at
of Computer Science at YCMU Nasik, then also University SWAM coordinator, then member of RRC committee, then nodal officer of NEP, and also she is currently director of Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra DDUK, and also director of Board of Exam and Evaluation of our university. Also, she has completed 5 research projects funded by DST and UGC with a total outlay of 3 crore 8 lakh 95,000. Also, she has research publication Scopus Index Journal 31, then UGC Care List 68. Her H index is 19 and I-10 index is 28. Also, she has created a database for Department Office Environment, and also uh, for professional membership of International Association of Engineering and Computer Scientists, then Computer Science Teachers Association, New York, and also International Association of Computer Science and Information Technology, Singapore. Also, she has published book chapters, has also edited a book, 3 edited book, and also have 1 patent published, and also, as I have told earlier, that 5 research project, and has also guided nearly 12 students, 8 for PhD, 8 for MPhil, and 4 for MTech. So indeed, it is an honor for all of us that she has associated with this refresher course. So again, I welcome her, and I would now request Bharti Gavli ma'am to give the details of 12 days working to all of us. Over to you, ma'am. Madam, unmute yourself, ma'am. So good morning, everyone, and respected Sahasrabudhe sir, Professor Satish Patil sir, Director of MMTTC, and the Assistant Director Mohammad Rafi sir, and my dear participants. It's indeed a great privilege to present you all the research and I mean, not research, but refresher course on information communication technology. But here, the title given to the course is a little bit molded for a specific outcome of the course. That is a strategic planning for e-content development and effective academics using information communication technology. We all know that as the digital revolution continues to transform every aspect of our life, education stands a very important and a crucial area of this transformation, where information and communication technology will definitely going to affect the education sector, and it has started affecting the education sector in one or the other means. And there comes the online education system in front of us. This education system, which will help us to create our own content, and which will help us to provide this particular information or the content 24/7 to the students. In the 21st century, technology is helping us to support the tools and becoming a co-driver of educational strategies, helping us to create e-content, digitally help us to curate the e-content and share learning materials, which will definitely going to break the traditional barrier, very important, of accessibility, engagement, and scalability. The integration of information and communication technology into academics, which will enable us or the educators to personalize the learning experience, enhance the accessibility, encourage the collaboration amongst the different peers as well as different institutes, also present the expertise of renowned resource persons to our stakeholder, the major stakeholder, that is our students, also help us to increase the efficiency of administrative processes, and will help us to evaluate the student, help us in many different administrative tasks that is related to the academics. Not only such important things will be useful or we will going to cover in this particular refresher course, but it will also help you to plan strategically about your own e-content, which will start from defining the objectives,
as it is already been told to all my dear participants that we will going to have, before coming to the course, we need to have your small topic ready, for which you wish to have your own e-content. So I'm sure that you must have come here will going to create electronically or digitally. It will also going to help you to align the curriculum. Usually, the Board of Studies or Board of Deans declare, or ad hoc boards will going to declare the curriculum. But here, e-content will help you to have the proper alignment of your curriculum while creating the e-content. So even we will going to talk about the alignment of the curriculum. We will also going to discuss about the content design principles. This is very important because we will going to discuss here the pedagogical frameworks, which we are talking since from many years about the Bloom's taxonomy, but we will going to really see how to fit our content into a different levels of Bloom's taxonomy. We will going to see into that, and which will be definitely enhance your teaching experience as well as the learning experience of the student. It will going to also discuss about the leverage technology tools like LMS, Moodle, Canvas, Google Classroom, etc., which we started using it in the time of COVID. But I'm here today, or in the coming week, we will definitely going to see the different shades of all these technology, which we haven't yet seen or experienced. Um, the very important and the last phase of our teaching learning method is the evaluation and the feedback. So we all know that we have started a national education policy, and where continuous evaluation and feedback is the most important part of the academic or education life cycle of the student. So during this particular course, we will definitely also going to see different parameters which we can use and different parameters which we need to incorporate while looking at the evaluation or the continuous evaluation of the student or of a major stakeholder. The course also will going to cover the effective information communication tools for better academics. We all know we have reached up to putting some links to the student, bringing some good videos to the student in terms of contents. We have also started giving the book references to the students while teaching. But this is not enough. We need to have a very important aspect of involving student into a learning process, where new innovative ideas of putting questions while going through the class, putting some quizzes which need to be evaluated, which will help student to get involved into whatever the classroom teaching is taking place. So this particular thing will also be showcased in a very different aspect as far as your own content is concerned. So we will going to help you to build your capacity as an educator. We will help you to showcase different blended learning models. We will also going to have interactive tools and platforms which will help you to provide the content to your stakeholders 24/7. Ask them beyond the classroom to contact you on certain platforms by providing different assignments or uploading different assignments and all that. It will definitely going to be, since it's a hybrid mass that or hybrid cluster of the participants, here the digital literacy will also be showcased, which will help you to sustain in this particular your career of being an educator. There are different challenges that are there with the e-content development. There are different challenges of being online. Teachers will never be replaced, because who is going to create this content and who will going to
help student to understand these e-content is nothing but the teachers. So or some or the other days there was a concept that there will not be a kind of contact of students and the teachers, but it will never going to happen. Teacher in a physical mode is really a important, will be a important person. But when it comes to off time classes, making student 24/7 availability of these contents will definitely going to help them out. And whenever they wish, they can, come across the content and get solved their difficulties. So, in short, or in to summarize the proper concept of this particular refresher course, lies in the successful integration of e-content and ICT into education, which will not only restricted to only providing the e-content or uploading the e-content and giving the link to the student, but a strategic planning will play a backbone of this transformation, which will ensure that our efforts are aligned, sustainable, and impactful. It will also going to embrace the technology thoughtfully. We can create a future where education is inclusive, engaging, and effective for all our learners. So let us commit to this vision and work together to harness the power of e-content and ICT for a betterment of academics and overall society. With this brief, I thank the director of the MMTC for giving me this opportunity to contribute into a very important and emergent area of developing the e-content and empowering the faculty members to have ICT and e-content development course. I thank you, sir. I thank Rafi sir and even the Sameer Sahasrabudhe sir for accepting our request and present over here for the inaugural session. I'm sure these 2 weeks will be thoughtful, will be fruitful to everyone. This particular course will be evaluated by the presentation, and during the course and during each session, the information or the instructions will be provided to the participants. I appeal all the participants to be very attentive and take as much as help of this particular course. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, ma'am. So the chief guest for this inaugural session, Sameer Sahasrabudhe sir, has joined our cloud meeting. So he is basically a professor of practice from IIT Gandhinagar, Director Educational Multimedia Research, Pune. He has also held the position of Director Educational Multimedia Research, Pune, in which design and development of MOOC courses were done for SWAM, and also management and training of the e-learning content creation team. Also, he was the adjacent faculty at Symbiosis University, mentor faculty to create learning-centric MOOC. Also, project research assistant at Department of Computer Science and Engineering at IDP Education Technology, IIT Bombay, in which MOOC courses were offered on digital transformation in teaching learning process, then designing learning center MOOC, then basic 3D animation using Blender, and also 3D architectural visualization and fundamental of 3D visualization. Also, he has graduated student Oh, supervision in yes. PhD, in which he has been a co-guide and external examiner of Cochin University of Science and Technology, also at Vishwakarma University. Also, he was the co-guide at IIT Bombay and also at Symbiosis International University. He has obtained his PhD from YCMU Nasik way back in the year 2015, and also PG in distance education from IGNO way back in the year 2010. Also, he is Bachelor of Fine Arts from Government School of Arts, Aurangabad.
So we can say that he is a son of soil, and it is really proud moment that he is now representing IIT Gandhinagar. Also, he has principal investigators of the project, and also Oh, enough. I think thank you yes, for, yes. Okay, okay, sir. but this reading of the curriculum might take and go Yes, really long. yes. Actually, to avoid this condition of extra long resume that is getting read, so I have actually kept a 100-word introduction on my website, and I think that helps. So, uh, okay, let me just. Yes, thank you for this opportunity, and thank you for joining in. I think it's a long workshop. 12 days is not simple thing, and keeping your patience for like 6 hours every day for continuously for 12 days is going to be a huge challenge. I can imagine that, sitting in front of a computer for so long. But uh, as the course designers have taken a lot of effort in putting in various speakers on various topics. Uh, so I think it is going to be an interesting journey for all of you. I would be kind of talking about a couple of important points in this inaugural session, just to kind of orient you towards how and what is going to be offered in a couple of days. And somebody told me that the majority of people participating are from commerce domain. However, it is a good time now to to actually check the domains. So my suggestion is use the chat box and type the name of the domain that you are working in. And just don't write like arts, commerce, science or something. Maybe you can write the best course that you can teach. So you can write the name of the paper, like it is called in university. Write the name of the paper, whichever you have been teaching, or you love teaching, or you have prepared it yourself and you like it very much. Any such uh, semester long course that you have been very good with. So type that in the chat box. आप जो भी कोर्स पढ़ाते हैं, जो भी पेपर पढ़ाते हैं, उसका नाम लिख दीजिए. ठीक है. ओके. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर. ओके. मुझे पांच पांच नाम तो दिख रहे हैं अभी, बट 50 लोग हैं. सो आई थिंक we'll wait for everybody to type in. Okay. Genetics and plant breeding, C programming, machine learning, software. Oh, इतना टाइम हो गया है, लेकिन एक भी कॉमर्स का नहीं दिख रहा है कोर्स मुझे. तो मुझे लगता है कि कॉमर्स वाले लिख नहीं रहे. Education, gender, school and society, contemporary India and education. Okay, great. English for beginners. So we can see English, we can see psychology, we can see Hindi Sahitya, we can see management, we can see engineering, we can see science, we can see genetics, Indian society, communication skills. Very good. I think it's a very good mix bag. Excellent mix bag. Okay. So there will be a lot of variation. Oh, graphics tool का भी है किसी का. Oh, okay. So, like it was explained, and I will just start the screen sharing if I am permitted to. Yes. So look at this. So this is my website. I would like to share my website with all of you. This is what I have written here. So in case, because I am giving, you have come to my webpage because I am giving a talk or conducting a workshop or something, then please use this bio. This is only 100 words.
उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है बताने के लिए, एंड वॉट एवर इम्पोर्टेंट थिंग्स आर दे आर ऑलरेडी केप्ट. Okay. Somebody's mic is on by mistake. Okay. So as mentioned, I'm giving my self introduction once again, which is slightly more shorter and relevant to the crowd that I'm talking to. I am like all of you know by now that I am born and brought up in Sambhajinagar, and I am a graduate of the very same university which has invited me today, so Babasaheb Ambedkar Marathwada University. And I completed my Bachelor of Fine Arts from the Government School of Arts. And after that, I have been traveling out. I first did my animation course in Hyderabad at a place which was started by ZTV. And then I worked into animation filmmaking for a quite bit of time, around 10 years. After that, I wanted to move into educational field. So I left the career at ZTV and then I joined IIT Bombay to see how animation can be used in education. So that was my topic. And after getting into IIT, I realized that मन से मैं टीचर बनना चाहता हूँ, और टीचर अगर बनना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ती है. पीएचडी करने के लिए मास्टर्स भी करना पड़ता है. तो ये सारी चीजें मुझे धीरे धीरे समझ में आ गई, क्योंकि फाइन आर्ट्स के कॉलेज में ये सब था नहीं उस वक्त. इनफैक्ट मेरे ख्याल से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कोर्स ही नहीं था बहुत सालों तक. सो देन आई वेंट टू इग्नो, और वहाँ मैंने मास्टर्स चालू कर दिया. फिर मैं ओपन यूनिवर्सिटी नासिक में चला गया, जहाँ पर मैंने पीएचडी कंप्लीट की. लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मेरे गाइड मुझे मिल गए आईआईटी बॉम्बे से, जिन्होंने कि कंप्लीटली मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया. मतलब एक आर्टिस्ट को उन्होंने रिसर्चर बना दिया. So that is what my journey is, and from last 10 years or so, I am working in the area of educational technology and how we can use various visualization things to enhance education. So animation को कैसे यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, वीडियो को कैसे यूज कर सकते हैं, इस सारे चीजों में मैं काम करता हूँ. और मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ज़्यादातर. मेरे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे स्वयं और एडेक्स जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है. और इन प्लेटफॉर्म्स पर उन कोर्सेस में जो रजिस्टर करते हैं उनकी संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है. So this is the why I'm telling this number is because I want to know the impact of online education. Online education से मैं 1.5 लाख बच्चों के साथ जुड़ पाया हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मैं पूरे करियर में शायद जुड़ पाता बच्चों से, अगर मैं किसी भी कॉलेज में किसी भी संस्था में पढ़ाता होता. So I just wanted you to appreciate the factor that कि ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत बहुत है, ऑनलाइन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत है, लेकिन अच्छे ऑनलाइन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो दैट इज द कैच हियर. केवल ऑनलाइन वीडियो बना के अपलोड करने से यू विल नॉट बी एबल टू रीच आउट टू द पीपल हु रियली वांट इट. तो आज से जो ये कोर्स चालू हो रहा है, उसमें हम लोग इस बारे में ज्यादा बात करेंगे कि हाउ कैन वी मेक लर्नर सेंट्रिक कंटेंट. क्योंकि कोई भी कंटेंट बनाना वो लर्नर सेंट्रिक कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. और लर्नर सेंट्रिक में क्या होता है कि हम लोग ये नहीं सोच रहे कि हमें कौन सा सिलेबस खत्म करना है, हमें कितने लेक्चर लेने हैं, हमें कौन सी एग्जाम लेनी है. जब हम लर्नर सेंट्रिक की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि बच्चों को क्या सीखना है. मेरे एक सीनियर टीचर होते थे, वो हमेशा उनका एक बहुत पसंदीदा स्टेटमेंट होता था कि सारे टीचर्स को लगता है कि वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी अंधश्रद्धा है. बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वास्तविकता है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं
वो शायद ही लोगों के समझ में आएगा। मतलब हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं, किसी किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं। शायद बच्चे अ, अपना क्लास खत्म करके दूसरे क्लास में जाने के बीच में जो 10 मिनट मिलते हैं, उसके बीच में किसी अपने सहपाठी के साथ बात कर लेते हैं कि अरे ये क्या बोल रहे थे आज का, ये कौन सा थ्योरम चल रहा था। और हो सकता है कि वो लोग अपने एक दूसरे की नोट्स एक्सचेंज करके सीख जाए, जो कि 1 घंटे का लेक्चर में नहीं हो पाया वो आगे 5 मिनट में हो जाए। लोग घर पे वापस जाते जाते साइकिल पे बात करते करते शायद कोई कविता समझ में आ जाए। ठीक है, सो वी डोंट रियली नो how have things worked. So we have taught, but that's not the true sentence. Students have learned. That is an important sentence. So now, if we want to make it learner centric, we have to go away from being teacher centric. Okay. So we don't have to worry about too much, worry about कि मैंने क्या पढ़ाया. Okay. We should start thinking about बच्चों ने क्या सीखा. Okay, so what have my students learned is the question we have to ask ourselves. Now, if we have to ask that question, तो क्लासरूम में कैसे करेंगे और ऑनलाइन में कैसे करेंगे, ये सारे सवाल आ जाते हैं। क्लासरूम में तो मुझे समझ में आता है सामने कि बच्चे खड़े हैं, बच्चे बैठे हैं एंड आई कैन टॉक टू देम, बट ऑनलाइन में कैसे करूँ जब बच्चे ही सामने नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन में जो दो प्रमुख प्रकार है टीचिंग के, उसमें से फर्स्ट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हम लोगों ने एक ऑनलाइन सिंक्रोनस मीटिंग अनाउंस कर दी है कि ये 10:50 पे मीटिंग चालू होगी और इसमें एक व्यक्ति आएंगे और आपसे बात करेंगे। देन वी दिस इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस एजुकेशन, सिंक्रोनस ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें सब लोग एक ही समय पे मौजूद होते हैं। लेकिन अलग एक तरीका, उसका दूसरा तरीका ये भी है जिसको कहते हैं एसिंक्रोनस। इसका मतलब है कि मेरा कोई वीडियो अपलोडेड होगा इंटरनेट पे और आप उसको देख लेंगे, या मैंने कोई दिया हुआ क्विज आप सॉल्व कर लेंगे किसी ऑनलाइन कोर्स में। तो ये असिंक्रोनस इसलिए होता है कि हर कोई अपने अपने समय के अनुसार उसको देख सकता है, पढ़ सकता है, सॉल्व कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। वो अपने तरीके से, रात को 1 बजे भी परीक्षा हो सकती है अगर वो एसिंक्रोनस मोड में। तो अगर एसिंक्रोनस मोड में मुझे लर्नर सेंट्रिक काम करना है कि बच्चों को वो अच्छा लगे, इसलिए तो फिर ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है। देयरफॉर वी हैव कम अप विथ set of lectures in this particular FDP about how to create learner centric content. तो हम दोनों तरीके पे बात करेंगे। जो सिंक्रोनस, जैसे जूम टाइप का ये मीटिंग चल रहा है, उसके ऊपर भी आप कैसे लर्नर सेंट्रिक काम कर सकते हो। सेकेंड इज असिंक्रोनस में भी आप कंटेंट कैसे बनाओगे ताकि लोगों को असिंक्रोनस तरीके से पढ़ते हुए भी उसमें समझ में आ जाए। तो आई एम गोइंग टू गिव यू आउटलाइन ऑफ what topics we have suggested and for what. बट उससे पहले एक और एक क्वेश्चन जो आप सभी से मुझे पूछना है, सो दैट आई थिंक यू कैन ऑल्सो अनम्यूट एंड आंसर। आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन कोर्स में हिस्सा लिया है? एनीबडी हैज अटेंडेड अ ऑनलाइन कोर्स? और वो कोई कोर्स होना चाहिए, मतलब एफडीपी नहीं, एफडीपी उसमें गिने नहीं जाएंगे। वी ओनली वांट कोर्सेस। ओके, और आप वो कोर्स कितने हैं वो नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप नाम दे सकते हैं अगर एक ही कोर्स आपने किया है तो। किसी ने ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया है? Sir, I 5 have एनपीटीएल attended. कोर्सेज। ओके, Sir, I have attended soft skills course by Swayam. ओके, ग्रेट। हु इज दिस? यू कैन, whenever you switch on microphone, please tell your name or roll number, anything is fine. I am Pranali Kadal. Okay, so you have attended the soft skills course from Swayam. Okay. हाँ, सो स्वयं पे मुझे लगता है वो कुछ आसान सवाल हो जाएगा, जल्दी आंसर आएंगे। कितने स्वयं कोर्स हैं? हाँ, ओके, 1 स्वयं ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स। ओके, 5 एनपीटीएल कोर्सेस। ओके, या 4, यस, 3 एनपीटीएल कोर्सेस। ओके, सो ये जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं,
इनको हम कोर्स क्यों बोलते हैं? मतलब हमने मूक नाम का भी एक वर्ड यूज किया बीच में, आपने सुना, मेरे प्रोफाइल में भी पढ़ा आपने कि ये मूक बनाते हैं। ये मूक मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में मुझे लोगों से कुछ रिस्पॉन्स चाहिए। सो कैन somebody explain what is a Sir, MOOC? I am Pranali Jagar, and the MOOC course means that they have developed the content on a particular topic. What is this? That's a MOOC. नहीं, कंटेंट डेवलप्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ये क्या होता है? ये कोर्स होता है। हाँ, it is an course. इट इज अ कोर्स। अच्छा, तो मैसिव ऑनलाइन कोर्स, ओके, मूक MOOC होता है स्पेलिंग। तो अभी ये मैसिव ऑनलाइन कोर्स में तो MOC हो गया, और एक O बच गया, Open. ओपन, करेक्ट। सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। अब ये चार शब्दों को ठीक से समझ लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। सो पहला वर्ड है मैसिव, ओके। सो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज मैसिव? क्या हो सकता है मैसिव का अर्थ, क्या हो सकता है? It reach towards the masses, means to many people. It should be towards masses. Yes, it could be large scale. Somebody, roll number 26 is saying. लेकिन लार्ज स्केल मतलब क्या हुआ? आपने सबसे बड़ा क्लास कितना बड़ा पढ़ाया है? आपके क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे कब थे? कितने Around बच्चे? 120. 120 का क्लास होता है, करेक्ट। दैट इज सपोज टू बी लाइक बड़ा क्लास, राइट? सो मैसिव कितना हुआ? 120 इज मैसिव, 100 is massive, okay. What is large scale? Roll number 26. Anybody has a number? क्या हो सकता है मैसिव का अर्थ? Like digital learning. डिजिटल लर्निंग भी करेक्ट है, लेकिन नंबर, कितने नंबर के बच्चे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन दैट कोर्स? मैक्सिमम नंबर, या मैक्सिमम का like, क्या हो सकता है? 1 लाख, 2 करोड़, क्या हो Indefinite. सकता है? इंडेफिनेट, ओके। इंडेफिनेट तो as much as possible. एज मच एज पॉसिबल, ओके, ठीक है। मतलब वो टिपिकली जो होता है ना, कोई अगर हमारे घर में किसी को हम बुलाते हैं ना, प्लम्बर को या कारपेंटर को, और पूछते हैं कि कितना होगा पैसा, आज सोच समझ के दे दो वाला, तो वो वाले आंसर को कैसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे? एनी आइडिया? एनीबडी वांट्स टू ट्राई टू गिव अ As much नंबर? that system can adapt, sir. एज मच एज सिस्टम कैन अडॉप्ट, वेरी वेरी गुड आंसर, ओके। सो सिस्टम के लिमिटेशन हो सकते हैं, एक साथ हो सके तो, लेकिन but I'll just take the sentence that reaching the maximum learners possible through the system, ऐसा लेते हैं, right? So it can be definitely beyond hundreds. So हो सकता है 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, okay, any number is possible. That is why it is called as massive. अब जब ये मैसिव हो जाता है, तो ये ऑनलाइन जा रहा है, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि इनको कोई भी क्लासरूम में बिठा सके आप, तो इसलिए वो ऑनलाइन कोर्स है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पे। टीचिंग ऑनलाइन हो रहा है, एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ओके, व्हाट इज ओपन? ओपन का अर्थ क्या होगा? Anyone Anybody? can join that course. Anyone can join that course, okay. Yeah, roll number 35, you said the word open. So what is your idea of what is It is open? open. It is open to all. Anybody can join who can Hmm. read and write Hmm. and can go online. Anyone who can go online, okay. But then more than that, it will also be, so आपके जो 120 बच्चों का क्लास होता है, उसमें और इस ओपन में क्या डिफरेंस है? आपके क्लास में कौन से बच्चे नहीं आ सकते हैं? Those who are distant. Or Those who who are are not admitted. Distant. Not enrolled. those who are not Those who are enrolled, not okay, enrolled. okay. And why are they not enrolled? वो क्यों Distant enrolled नहीं है? children. Maybe they are not interested. They are not interested. गारंटी है 120 बच्चों में भी कोई
सारे इंटरेस्टेड बच्चे होंगे? नहीं। ओके, सो इंटरेस्ट लेवल पे अगर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, करेक्ट। सो देर इज सर्टन एलिजिबिलिटी, ठीक है। 12th में इतने मार्क्स होंगे तो ही आप इस कॉलेज में आओगे, इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आओगे तो ही आप सेकेंड ईयर में जाओगे। सो वो एक क्राइटेरिया होता है। आपके क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो पिछला कुछ तो एलिजिबिलिटी कंप्लीट करके आए हैं, करेक्ट। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया ना होते हुए जब ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है तब वो ओपन हो जाता है। तो उसमें जब बच्चे आएंगे आपके कोर्स में तो हो सकता है कि वो बच्चे 12th साइंस के होंगे और वो मैनेजमेंट के कोई क्लास में आके बैठे होंगे, या वो मैनेजमेंट के बच्चे होंगे जो कि एस्ट्रोफिजिक्स के क्लास में आके बैठे होंगे। सो यू कैनॉट हैव एनी एलिजिबिलिटी फॉर देम, एनीबडी इज एबल टू ज्वाइन दैट। जिन्होंने भी उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया है वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं उस कोर्स को, ठीक है। सो नो एंट्री क्वालिफिकेशंस, करेक्ट। एंड व्हाट इज द कोर्स? सो कोर्स का डेफिनेशन अभी किसी ने बोला था मुझे, प्रांजलि। A content based on particular topic. करेक्ट, कंटेंट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। सो अगर ये डेफिनेशन हम मान लेते हैं सही है, तो YouTube में जाइए आप और बोलिए कि हाउ टू टीच, या सॉरी क्या कहते हैं उसको, क्वांटम फिजिक्स। तो एक सीरीज ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे आपके, ठीक है। वो भी ऑनलाइन है, वो भी ओपन है, वो भी मैसिव है, और वो भी कंटेंट अराउंड द स्पेसिफिक टॉपिक है। ये कोर्स बन जाएगा क्या? विल दिस बी अ कोर्स? नो। ओ 56 says no. Why no? Answer. Because No there will be certificate will be no provided over there. evaluation. Evaluation won't be there. Okay. So अगर मैं उनको बोलूंगा कि ये YouTube में कोर्स ले लीजिए और एक मैं आपको पेपर भेजूंगा पोस्ट ऑफिस से, उसको सॉल्व करके भेज दीजिए, हो जाएगा क्या कोर्स? Sorry, YouTube courses doesn't have some authenticity in it. This should have some. Authentic material is used or not. They should have some material. Sir, it should be in 4 quadrants. What 4 quadrants? मैंने जैसे बोला पहले आप अपना नाम बताइए और फिर बताइए जो भी आपको बोला। Sir, I am Mukta Dhopeshwar, sir. मुक्ता। हाँ, वो कौन से 4 क्वाड्रेंट में होना चाहिए? Sir, there should be PDF notes, presentation, videos अच्छा and exam. अच्छा, तो जब तक वो 4 क्वाड्रेंट नहीं रहेंगे तब तक वो कोर्स नहीं बनेगा ना। एक्चुअली 3 चीजों की जरूरत है किसी को भी कोर्स बोलने के लिए। कोर्स के डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि इससे क्या मिलेगा बच्चों को। सेकंड होना चाहिए उसका रेलेवेंट कंटेंट। वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा। वो सारे हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, बुक्स हो सकते हैं, रीडिंग मटेरियल हो सकता है, पेपर हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकते हैं, सिमुलेशन, एनिमेशन, सब कुछ वहां आ जाएगा। और फाइनली असेसमेंट होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स हो पा रहे हैं कि नहीं इस कंटेंट को ग्रहण करने के बाद। इफ दीज 3 थिंग्स आर देयर देन दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी कॉल्ड एज कोर्स। इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यूट्यूब वीडियो में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ऐसे ही एक लिस्ट ऑफ वीडियोस बना दिया है किसी ने, C++ में प्रोग्रामिंग करो, लेकिन ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव के साथ बनाए हुए लेकिन असेसमेंट ही नहीं है। सो ये सारे इसलिए कोर्सेस नहीं बनते, ये होते केवल कंटेंट। सो नाउ वी नो कि कोर्स क्या होता है और मूक क्या होता है। तो आप सबको समझ में आ गया कि मूक क्या होता है। जिनको भी समझ में आया है वो एक बार अनम्यूट करके बता देंगे, और जिन्होंने अब तक बात की है वो लोग बात नहीं करेंगे, नए लोग बात करेंगे और डेफिनेशन बताएंगे मुझे। व्हाट इज अ मूक अकॉर्डिंग टू यू नाउ? Hello, sir. Am I audible? Yes, what is your name? Hello, sir. I am roll number 3. Am I audible? Yeah, you are audible. Please tell me. You are audible.
Sir, MOOCs provides facility to all those who have eager for learning and Correct. those who are doing job due to family problems. And they can Okay. avail this education. Hmm. Correct. Sir, can I answer? Yeah. Okay. Go ahead. Sir, it is a model to deliver learning content irrespective of Who no is who is eligibility speaking? or so I'm roll number 61, Dr. Mansi Baheti. Okay. MOOC is a model to deliver the content, learning content online to any person, irrespective of their qualification or limit to attendance or time restrictions like. Okay. बट अभी भी हमारी डेफिनेशन हाफ ही हो रही है. प्रोवाइड कंटेंट बोल रहे हैं हम Sir, लोग. हाँ. sir, can I? या. नेम. Okay. Yeah, my name is Sati, sir. Roll number 14. Okay. I just try myself, sir. That is MOOC means massive open online courses. Correct. Massive, that means more than one. Yes. More than any number. Okay. Go ahead. Hello, sir. हाँ. Yes, sir. My name is Dr. D.M. Marade. Hmm. MOOCs has just, for example, here the LMS system. Okay. And Moodle is the best example. Just like here, the one example about the Prolo, to sharing the some kinds of information from more than one persons at a time. More Moodle. than 1%. Right? Okay. But yes. So MOOC is something which is available to more than 1% at a time. Is that what you're saying? Excuse me, sir. Yes, sir. Okay. Anybody wants Means here to? the one platform that sharing for the notes, quizzes, Correct. or some questions, papers, as well as some kinds Correct. of information, just like. But Yeah, excuse me, okay, sir. I will correct you for that. See, platform is not a course. So Moodle को हम MOOC नहीं बोल सकते हैं. जैसे रिसर्च पेपर होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं बोल सकते ना कि ये रिसर्च पेपर है, ये किताब है. उसमें से लिखे जा सकते हैं. मूडल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, लेकिन मूडल ये MOOC नहीं है. Excuse me, sir. हाँ. Yeah, this is Harris. One important point here in MOOCs is that there is a peer-to-peer learning that happens among the students. Correct. And it is massive. Millions of students can join. Correct. There is a content that is at his own pace. He can watch and learn. He can raise queries, and there is an expert who guides and answers the queries. At his own time, he will be answering it, and evaluation will be done. And there will be some kind of a projects that can be submitted, which we call as capstone projects. And finally, they will be evaluated. There can be non-evaluation based, just completion, or you can have scores, credits that can be generated. So credit-based system. So like this, there are various nuances that are there in this. Correct. There are so many other points also there. But at the core, we all agree that it is massive, that any number of people can take. It is open. It is open without any qualifications and barriers. It is online. It is not at all offline. And it is a course. So it will have objectives, content, and assessment. Okay. Now, in addition to that, there are these 4 quadrants, and there are so many other nuances. There can be projects, there can be submissions, there can be online evaluations, there can be live sessions to support learning. But ये सारी चीजें होती है to promote learner centricity. कि learners के लिए कुछ जरूरत है, इसलिए किया जाता है. ठीक है. So in that respect, I think now if every one of you is agreeing to the definition that we discussed, तो जिन लोगों को लगता है कि ये पॉइंट समझ में आ गया है, they should type +1 in the chat box so that मुझे समझ में आएगा कितने लोगों को समझ में आया है. और जब वो समझ में आएगा तब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे. ओके. ओके. +1. ओके. सो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अलग अलग टाइप के MOOC किए हुए हैं. किसी ने स्वयं पे किए, किसी ने कोर्सेरा पे किए हैं, किसी ने. तो जब आप
एक स्टूडेंट के मोड में थे उस कोर्स के अंदर। ये देखते हैं कितने लोग आए, 19, 20, 21 लोगों के मैसेजेस आ गए हैं। ओके, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया है क्या हुआ है यहाँ पे। सो आई एम वरीड कि हम आगे बढ़े क्या। ओके, लेट अस मूव अहेड। बट ओके, ऑल दोज हु हैव सेड कि उन्होंने कोर्स किया है, ऑनलाइन कोर्स किया है, या उनको अभी मूक समझ में आया है, तो आपके अपने एक्सपीरियंस में ये बताइए कि मूक में अगर इतने सारे फायदे हैं तो मूक के प्रॉब्लम्स क्या है। व्हाट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज अ प्रॉब्लम इन मूक। आप उसको आप टाइप कर सकते हैं। वन प्रॉब्लम विथ मूक, आपके हिसाब से सबसे टॉप वाला प्रॉब्लम क्या है। किसी और ने वो अगर लिख दिया है ऑलरेडी तो आप उसको उसको टैग करके +1 कर दीजिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ओके। अरे 28 और 60 दोनों इतने दूर दूर बैठे हुए रोल नंबर है, दोनों का आंसर सेम है। ओके, सेल्फ लर्निंग बेस्ड। और somebody wants to speak, they can unmute and speak। पहले अपना नाम बताइए। यस, इंदिरा, आपने अनम्यूट कर दिया है। एनीबडी वांट्स टू से, हैंड रेज कीजिए तो मैं बताऊंगा। So this is Harris again. ओके, Yeah, it is all dependent upon one's own motivation. You can cheat yourself from getting the degree, but whether you have really acquired the skill, you yourself can know, because there are avenues where you can search the answers and you can paste and you can get a करेक्ट degree out of it. But करेक्ट। it is all dependent upon you, whether you are interested in learning or just getting the degree. ओके, सो ये सो सेल्फ लर्निंग मोटिवेशन कितना है उसके ऊपर a lot depends on that। ओके, lack of personal interaction, lack of personal practical practice, very good। एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है कहीं कहीं पे, स्पेसिफिक सेंटर पे पर्सनलाइज इंटरेक्शन नहीं होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, वेरी गुड, सीमा हैज सजेस्टेड लाइक ओके। तो वो मूक की कोई लैंग्वेज होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, और मुझे नहीं आती है, तो देन आई विल हैव अ प्रॉब्लम। ओके, गुड। एनीबडी वांट्स टू से समथिंग। Yes, sir. हाँ, Sir, high dropout rates, sir. हाई ड्रॉप One आउट of रेट, the वेरी survey गुड। was done by my MC student. We found that many of the students were saying that they cannot concentrate for more than 30 minutes for online classes as compared to offline classes, दे because there are some कैन, informal talks also in the offline class. अच्छा, तो जिस तरह से Concentration का problem. कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ओके। और कुछ है प्रॉब्लम? सो in order to address those problems we have designed certain sessions for you। ये है हमारा सेशन का प्लान। इफ नाउ यू कैन मेक सम नोट्स अबाउट इट इफ यू वांट टू, ताकि किसमें कौन से सेशन में क्या होने वाला है, दैट यू विल रियलाइज। ओके, सो तुरंत बाद, मेरे सेशन के बाद देयर विल बी अ सेशन अबाउट, जो हम बार बार ओपन ओपन बोल रहे हैं ना, कि ओपन सोर्स या फ्री चीज क्या होती है, उसके बारे में पहला सेशन रहेगा बाय अन्नपूर्णा माधुरी। शी इज आई थिंक हेड ऑफ ट्रेनिंग एट प्लेस नियर हम्पी इन कर्नाटका, और वो एसएनडीटी में अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर रही है। शी विल टॉक अबाउट कि जो भी चीजें हम देखते हैं दुनिया में, जो भी हमें लगता है कि हमने गूगल में सर्च किया है और हमें इमेज मिल गई है, तो ये फ्री हो गई, अभी हमें दिखाई दे रही है, तो वो उस एस्पेक्ट पे वो बात करने वाली है कि
what is the importance of ओपन सोर्स क्या होता है, फ्री क्या होता है, और आईपीआर क्या होता है, किसी का प्रॉपर्टी कॉपीराइटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेगी ताकि वो हमें समझ में आ जाए कि हम कौन सी चीजें यूज नहीं कर सकते हैं। दोपहर को 3 बजे से तेजिंदर कौर विल टॉक अबाउट हाउ टू डिजाइन ब्यूटीफुल स्लाइड्स, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमें स्लाइड चाहिए तो अच्छा डिजाइन चाहिए। तो आपके एग्जिस्टिंग डिजाइन को अच्छा करने के लिए एक टूल यूज करके, कैनवा यूज करके, वो एक हैंड्स ऑन सेशन लेने वाली है जिसमें कि आपके स्लाइड्स को मॉडिफाई करके डिजाइन हो जाएंगी। टुमारो मॉर्निंग वी विल हैव अजिता देशमुख टॉकिंग अबाउट ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब लाइव सेशन और इंटरेक्टिव सेशन सेपरेट कैसे करते हैं, उनको ब्लेंड कैसे करते हैं, क्लासरूम का सेशन और ऑनलाइन सेशन को मिक्स कैसे करते हैं, इसके बारे में। ईला बेनिल एक डॉक्टर है, डेंटिस्ट है रादर, वो कोयम्बतूर से बात करेंगी हमारे साथ, और वो बात करेंगी अबाउट क्लासरूम के अंदर आप इंटरेक्टिविटी किस तरह से ला सकते हैं। उसके बाद देवायन भट्टाचार्य विल टॉक अबाउट हैंड्स ऑन सेशन कि आपको ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाना है। तो गूगल में एक बहुत ही आसान तरीका है गूगल क्लासरूम का, उसके अंदर देयर विल बी अ हैंड्स ऑन सेशन ऑन हाउ टू डू दैट। एंड देन मूक जब करते हैं तब हाउ डू यू राइट गुड स्क्रिप्ट्स अबाउट वॉट एवर टॉपिक यू हैव चोजन, उसके बारे में गणेश लोखंडे विल टॉक। फ्राइडे को सुबह डॉक्टर सोफिया गायकवाड़ विल टॉक अबाउट लर्नर सेंट्रिक कंटेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर का एक ओवरव्यू रहेगा विच विल बी फॉलोड बाय, जो किसी ने 4 क्वाड्रेंट बताया था, तो 4 क्वाड्रेंट टिपिकली होते हैं वीडियोस, एक्टिविटीज, रीडिंग मटेरियल और डिस्कशन फोरम। एक्टिविटीज के अंदर ही असेसमेंट आ जाता है। ये चारों को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे विस्तार से। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड सेशन, दिव्या ठाकुर विल टॉक अबाउट आपके वीडियो को इंटरैक्टिव कैसे बनाना है, मतलब आपका वीडियो एक पॉइंट तक आके पॉज हो जाएगा और उसके बाद बिना आंसर दिए बच्चे आगे सुन नहीं पाएंगे, ऐसा सिचुएशन कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में दिव्या ठाकुर विल टॉक अबाउट। उसी का हैंड्स ऑन सेशन होगा कृष्णकांत रॉय, आई थिंक ही इज द पर्सन कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम माय साइड, वो अभी भी शायद ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे थे। के रॉय, इफ यू आर ऑनलाइन यू कैन जस्ट वेव योर हैंड एंड या आर यू देयर? Yes, I'm there. Okay, great. So, KK Roy, we call him KK Roy, but his name is Krishnakant Roy, और वो he's the teaching faculty at the Symbiosis Pune, and he's also a passionate person in all these learning techniques, online education, और तो he will take that hands on। उसके बाद फिर से गणेश लोखंडे विल हैव अ सेशन ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन कोर्स में स्क्रिप्ट राइटिंग कैसी करनी चाहिए। विल हैव सैटरडे वेयर सौरभ मेहता फ्रॉम आई थिंक Vidyalancar School of Information Technology will talk about. Then there will be a hands-on session of how to create storyboard for your content. And then there is an entire afternoon session की एक्टिविटी डिजाइन कैसी करनी है। कोई भी हम एक्टिविटी जब बनाते हैं ऑनलाइन के लिए तो एक्टिविटीज कैसे बनती है, कैसे बनाना चाहिए, फीडबैक कैसे देना चाहिए, दैट वुड बी द टॉपिक। एंड नेक्स्ट वीक मंडे विल स्टार्ट विथ रीडिंग मटेरियल चूज कैसे करना है। जब भी हम कोर्स के लिए रीडिंग मटेरियल ढूंढते हैं तो देखा गया है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, सो हाउ टू मेक दैट, उसके बारे में एक टॉपिक होगा और उसका ही हैंड्स ऑन सेशन उसके बाद होगा। एंड फाइनली somebody said like इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है, तो हमने उसी दिन दोपहर का सेशन इसी के लिए ऊपर रखा है कि डिस्कशन फोरम को कैसे यूज करना है ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। उसके ऊपर एक पौंडीचेरी की प्रोफेसर है बी सुधा, शी इज गोइंग टू टॉक। एंड द लास्ट सेशन ऑन दैट डे इज एआई इन एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा ओवर पावर हो रहा है, सो व्हाट इज द
role of AI in education. It will be Shikant Roy who will speak about it. And final day of this particular week will be next Tuesday, where hands-on session on how to upload content on Google Classroom. So that will be explained to you. तो आप अपना कोर्स भी बना सकते हैं। और बाकी के 3 सेशंस में आपने जो भी कोर्स कंटेंट अपलोड किए हैं, जो भी आपने वीडियो बनाए हैं, किसी ने एक्टिविटी बनाई होगी, किसी ने रीडिंग मटेरियल ढूंढा होगा, इन सबके प्रेजेंटेशंस होंगे जो कि देखे जाएंगे और आपको फीडबैक दिया जाएगा। सो ये है हमारा प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। सो मुझे अब ये लग रहा था कि आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू अनदर क्वेश्चन नाउ। सो आई एम स्टिल गेटिंग आंसर्स टू द अर्लियर क्वेश्चन। कोई टेक्स्ट मैसेज अभी भी आ रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज क्या है? हाँ, ओके। So I am going to just share a couple of interesting examples or stories of online education with you. But उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है किसी के मन में तो you can ask me now. Yeah, go ahead. Any question? No question. नो क्वेश्चन के 2 ही मतलब हो सकते हैं। एक तो जो भी मैंने बोला वो सब समझ में आ गया, या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सर अगर इसका पूरा डिटेल में एक मैनुअल अगर देंगे तो हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकेंगे, ये सब लेक्चर्स का अरेंजमेंट। हाँ, ओके ओके, गुड पॉइंट। सो उसके लिए आई थिंक आई विल डू वन मोर थिंग। आपको हर जो स्पीकर है वो अपना अपना कंटेंट डेफिनेटली शेयर करेंगे, लेकिन ज्यादातर स्पीकर्स ना अपने कंटेंट को अपने वेबसाइट पे रखते हैं और वो वेबसाइट पे फ्री रखे हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, ये मेरी वेबसाइट है, मैं आपको अभी चैट बॉक्स में सबको भेज देता हूँ। चैट में जाके ये है मेरी वेबसाइट। ओके, तो उस वेबसाइट पे अगर हम टॉक्स नाम के एक टैब पे क्लिक करेंगे, जो लेफ्ट साइड में पहला ही वर्ड है टॉक, तो आपको मैंने दिए हुए सारे टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर क्लास आपको ये वाले इनमें से कोई भी सेशन का स्लाइड चाहिए, आपको फिर से रेफर करना है या डाउनलोड करना है, इट्स ऑल देयर। ऐसे ही हर स्पीकर को शायद हर स्पीकर के पास अपना वेबसाइट है, इनमें से जितने भी स्पीकर आपसे बात करने वाले हैं, एंड यू कैन आस्क फॉर देयर वेबसाइट, जहां से आप उनका जो टॉक हुआ था वही नहीं, बाकी के भी टॉक डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। लेकिन हम लोग HRDC को भी भेजते रहेंगे हमारी स्लाइड्स, और वो लोग एक कंटिन्यूस मैनुअल बना देंगे। सो आई थिंक HRDC team, if you are listening to this, that will be easier, sir. yeah, okay, ठीक है, no problem. We will be sharing. और हम इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इसको यूज करें, और इसलिए हमने इन कंटेंट को सबको फ्री और ओपन सोर्स करके रखा हुआ है, ताकि किसी को भी इसको यूज करना है तो उसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, ना ही परमिशन लेने की जरूरत है। सो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि दैट विल हेल्प। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस पार्ट? आई हैव वन मोर क्वेश्चन बिकॉज ऑफ, मतलब जो नेक्स्ट वाले सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसको मैं अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी 12:10 हो रहा है। सो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सबको कि अगर मुझे जो भी हम कंटेंट यूज कर रहे हैं अभी, या कहीं से भी हमें डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि उसके पीछे क्या कॉपीराइट के रीजन होते हैं?
कि रूल क्या होते हैं? कैन यू यूज एनी कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट एज इट इज? एनीबडी कैन आंसर? सर सेक्शन 43 के तहत हम किसी का कंटेंट डाउनलोड नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन अगर हम डाउनलोड करते तो दे विल बी कंसिडर इन सेक्शन 43। ओके, एज इट विल बी कंसिडर्ड एज just plagiarism. Okay, fine. Okay, 33 and then 61. 61 is the IT Act. Yes, sir. नहीं, say roll number 61. Yes, sir. Suppose I am making any content like PowerPoint presentation or video. I will have to use some references from some resources. Correct. So how to acknowledge them? Just is it sufficient to put the references at the end slide or no? Good question. Anybody else has a question? 33. Anybody wants to raise a hand? I'll answer this definitely. किसी और के पास आंसर है इसके बारे में? Is it sufficient to acknowledge the references at the end? Somebody gave me the IPC की धारा बता दी थी किसी ने, तो उनको क्वेश्चन है कि इज इट गुड और मेरे ऊपर ये धारा लग जाएगी? Is it a mistake or is it the correct way? Sir, until and unless we use it for commercial benefit. Acha, then it is fine. Sir, without references, we cannot do any kind of research work. Correct. Very and that's good. why we are referred to some kinds of references for that to doing as a new innovations in a World Wide Web. Correct. And that's why we are utilized as references. So, for example, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ रोड पे और मैंने देखा कि कोई अच्छा डिजाइन बना हुआ है। एक कोई आर्टिस्ट है जो बैठे हैं वहां पे और उन्होंने एक अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ है। मुझे अच्छा लगा और मैंने फोटो ले ली उसकी। उनको पूछा मैंने, लेकिन मैंने फोटो ले ली और मैंने अभी अपलोड कर दी मेरे फेसबुक के ऊपर। अब ये रेफरेंस देने के लिए उनका कुछ मुझे नाम वाम कुछ पता नहीं है, मैं कहाँ से रेफरेंस दूंगा उनका? तो मैंने नहीं दिया। अब ये प्लेजरिज्म हो गया या कंसेंट तो है मेरे पास? मैंने उनको पूछा था फोटो ले लूं क्या, उन्होंने हाँ बोल दिया था। ये अभी क्या हो गया? इज इट अ क्राइम और इज इट नॉट अ क्राइम? इज इट प्लेजरिज्म, नॉट अ प्लेजरिज्म? मैं कोई उसका कमर्शियल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मस्ती के लिए मेरे फेसबुक के ऊपर मैंने फोटो डाल रखी है, मेरा बैकग्राउंड बना दिया, डीपी बना दिया, जो भी किया है मैंने, ठीक है। इज इट प्लेजरिज्म, नॉन प्लेजरिज्म? इज इट अ गुड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिस? इज इट अ क्राइम, नॉट अ क्राइम? कैन somebody answer? Of course, Not it is a crime. bad practice. Who is speaking? Mukta Tupeshwarkar. Okay. It is not a crime. Okay. It is a bad practice. It is a bad practice. Who says this? Pranali. Okay. Pranali says it is a bad practice. Mukta says it is not a crime. Okay. Anybody else has a point of view? 10 number. बताइए. Roll number 10. Roll number 12. Do you want to speak something? No, just I start. Okay. ठीक है. Okay. Anybody else wants to say something? I can't. Roll number 31. हाँ, बोलिए. Sir, it's not even a bad practice or a crime. It's just we are appreciating the artist and putting it on our social media as an appreciation to its works. So it's not a bad practice or some. Okay. But if tomorrow the artist goes to the police station and says that ये मेरा ड्राइंग है और समीर सहस्रबुद्धे के डीपी में कैसे आ गया ये, तो क्या बोलेंगे उसको? सर, रोल नंबर 3. हाँ, बोलिए. रोल नंबर 3 बोलिए. हाँ जी सर, प्लेगरिज्म चेक अगर हम करते हैं तो उसमें हम हमारे रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी पे साइट करते हैं, तो इट इज नॉट अ क्राइम. अच्छा, ठीक है. सो It is not a crime because we are citing their name.
about got the it, work, got it, and got then we it, have taken it the reference from their work. So got literature it, review में हम जब दिखाएंगे, so we will definitely mention their name in the bibliography. got it, got it. Thank you. सर सही है ना? तो मेरा ये पॉइंट है कि इज इट करेक्ट कि अगर मैंने उस आर्टिस्ट का नाम लिख दिया सपोज, ठीक है, अगर वैसे ही हम पॉइंट Sir, बोले, sir, roll wait number wait wait let me 36. complete, let me complete. So if I write the name of the artist and then put it as my DP, is it still crime or not a crime? जैसे हमने बिब्लियोग्राफी में लिख दिया था और हमने लिख दिया यहाँ पे, is No, it it's not a crime then. it's not a crime then. अगर मैं बोलूँ कि फलाने आर्टिस्ट का है, उनका Yeah. कोई फेसबुक पेज नहीं है, लेकिन मेरा फेसबुक पेज है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, ओके, लेकिन आर्टिस्ट का Yeah. नाम मैं नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आर्टिस्ट का नाम है Yes. विनय You have राहुल. been, he has been given a credit by you. Created by you, so then it is not a crime, ठीक है. But that is where the exact point is that किसी का माइक ऑन है, ओके, हाँ हाँ. So the point is, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए. Who had asked this question? Initially I forgot the name of the person who had asked this main question. हाँ, roll number 61. So आपका क्वेश्चन जो था ये लिटरेचर में, रिसर्च पेपर्स में, क्रिएटिविटी में, सभी जगहों पर ये लागू होता है. और जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें ब्रोशर बनाना है, हमें कोई पोस्टर छापना है, हमें कोई रिसर्च पेपर लिखना है, और उसके लिए जब भी हम कोई इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हम कहीं से भी लेते हैं, और अगर हमें उसका ओनर का नाम पता है, तो उसका नाम अगर हम मेंशन करते हैं रेफरेंसेस में, या हम लिख देते नीचे कि इमेज टेकन फ्रॉम सो एंड सो वेबसाइट, फिर भी ये फेयर यूज नहीं है. ये सब लोग ये जान लो. ये हम हमारे तरफ से रेफरेंस का नाम देने से हमारे पाप कम नहीं हो जाते, ठीक है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने किस तरीके के लिए उसको रखा हुआ है, उसका लाइसेंस उनका क्या है, उन्होंने किस किस लिए वो बनाया है कंटेंट, वो उन्होंने बोलना चाहिए, और उसके हिसाब से ही हमें यूज करने की परमिशन मिल सकती है. अगर उन्होंने बोला है कि ये मैं मेरी खुशी के लिए मैंने पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, बाहर रखा है मैंने, या मेरा ड्राइंग मैंने मेरे बोर्ड पे रखा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई यूज करे किसी भी काम के लिए, कमर्शियली यूज ना करे, फ्री भी यूज ना करे, अपना डीपी भी नहीं बनाए, तो बेसिकली आप फोटो ले सकते हैं, लेकिन फोटो खुद ही देख सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते वो. अगर उनका ये कहना है तो हम ये कुछ नहीं कर सकते. तो वो कहना कैसे पता चलेगा हमें कि उन्होंने क्या कहा है? क्योंकि हमने गूगल सर्च किया, हमें 4 इमेजेस आ गए और हमें अच्छी लगी इमेज, वहां लिखा तो नहीं है ये सब. सो देर इज अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉपीराइट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कंटेंट. वो इंफॉर्मेशन हर इमेज के कंटेंट के साथ लिखी होती है. अगर नहीं लिखी होती है, इसका मतलब है उनको उस चीज को कॉपीराइटेड रखना है. ओके, ऐसा नहीं है कि वहां तो लिखा नहीं था. तो इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल, इट इज सेड दैट वेन एवर नथिंग इज रिटन देयर, इसका मतलब है उनका 100% कॉपीराइट उसके पास है, और वो किसी को शेयर नहीं करना चाहते. अगर उनको शेयर करना है तो उन्हें एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा. और अब अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है, ओके. अगर आप इस पीडीएफ को क्लिक करेंगे, जैसे 10 मई का एक टॉक है मेरा यहाँ पे गांधीनगर में दिया हुआ, तो मैं अगर इस पीडीएफ को क्लिक करता हूं तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी. कोई अनम्यूट करके बताइए वो दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है. ओके. सो इसके फर्स्ट स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा हुआ है, ये टाइटल है और ये नाम है. मैंने यहाँ पे कोई कॉपीराइट इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है. इसका मतलब है कि ये कॉपीराइटेड कंटेंट हो गया है. इसको किसी को भी यूज करने के पहले मेरी रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी. आप मेरी दूसरी स्लाइड देखिए,
जिसका डेट है 28 जून 2024। अगर आप यहाँ जाके एक पीडीएफ को क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक सबसे नीचे आपको एक एक लाइसेंस दिखाई देगा। अब इसको मुझे जूम करना पड़ेगा, तब आपको करेक्टली दिखाई देगा। ये मैंने जूम किया और अब आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ क्या लिखा है? This presentation is released under Creative Commons license. You are free to use, distribute and modify it, including for commercial purposes, provided you acknowledge the source. ये लिखा है, इसलिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं इसको। हालांकि कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये फ्री में तो एनीवे समीर के वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन रिमेंबर दिस पार्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, लाइसेंस ना लिखा होना इज नॉट एट ऑल कंसेंट टू यूज इट एनी वे वी वांट। वहां पे ना लिखा होना का मतलब है उनका उसके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उनको केवल पता नहीं है कि ऐसा लिखना होता है इसलिए। लेकिन अदरवाइज ही और शी इज द ओनर ऑफ द कंटेंट एंड कॉपीराइट इज विथ दैट पर्सन फॉर एवर। जब तक कि वो उसको रिलीज नहीं करेंगे, उस फोटो के लिए, उस वर्ड के लिए, उस टेक्स्ट के लिए उनका कॉपीराइट बना रहेगा। ठीक है? तो सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में हाँ हाँ कि बोलिए। हम चैट जीपीटी या जिमिनी, हाँ गूगल जिमिनी, ये गूगल जिमिनी क्या करता है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उससे, तो वो कहीं से तो जो ऑनलाइन कंटेंट पब्लिश है या वेबसाइट पे है वहां से उठा के हमको एक समरी बना के देता है। और करेक्ट कई बार तो इमेजेस किसी वेबसाइट से उठा के देता है। करेक्ट। तो वहां पे हम कॉपीराइट कैसे उसको नहीं, प्रोवाइड तो करेंगे? चैट जीपीटी और एआई की कॉपीराइट के लिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि इसकी कॉपीराइट हमारी नहीं है। ओके, सो चैट जीपीटी और जेमिनाई से बना हुआ कंटेंट का कॉपीराइट किसी का भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें सेफ रहना है, अगर हमारे पेपर को प्लेजरिज्म डिटेक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हमारे तरफ से जिम्मेदारी ये होगी कि वी शुड एक्नॉलेज कि ये वाला पोर्शन हमने चैट जीपीटी से लिया हुआ है। या नहीं तो फिर जो चैट जीपीटी टूल बने हुए हैं, डिटेक्शन टूल्स, उसमें आ जाएगा कि ये वाला पार्ट इन्होंने चैट जीपीटी से लिखवाया है एंड योर पेपर में गेट इनटू ट्रबल। चैट जीपीटी को केवल इसके लिए यूज करना चाहिए कि वो किस तरह से लिख रहा है उसको समझ के अपने लैंग्वेज में पैराफ्रेज कर रहा है। क्योंकि उन्होंने जो इमेज बनाई है या इन्होंने जो टेक्स्ट बनाया है, वो गारंटी के साथ मैं उनके साथ उनके ऊपर केस नहीं कर सकता हूँ कि ये वर्ड आपने मेरे वाले टेक्स्ट में से लिया है इसलिए आप मुझे कॉपीराइट फी दे दो इसका। ये नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए वो लोग। सर जिमिनी जिमिनी जो है वो नीचे रेफरेंस प्रोवाइड कराता है कि करेक्ट, ये जो टेक्स्ट है हमने यहाँ से इस लिया है वेबसाइट मैंने, से उठाया हाँ है। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या वो नीचे दिया हुआ रेफरेंस देंगे या देंगे, जिमिनी का रेफरेंस देंगे? देंगे, दोनों देंगे। लेकिन मेनली द ओरिजिनल क्रिएटर हैज टू बी एक्नॉलेज्ड इन एनी कंडीशन। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन ऑथर्स के मन में होता है, रिसर्चर्स के मन में होता है कि हम कौन सी लाइन क्रॉस कर रहे हैं जो प्लेजरिज्म के अंदर चली जाएगी। और ओपन सोर्स ये चीज क्या होती है, ओपन सोर्स के फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारी नेक्स्ट स्पीकर आ रही है, जिनका नाम है माधुरी श्रीनिवास। के इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. She is the next speaker. Yes, and a special lecture on AI in education is going to be delivered by Professor K. Roy, जिसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे ख्याल से वो देने वाले हैं। Is it right? Absolutely. Yes, yes, yes. Yes, I'll cover all of this, sir. yes, yes. So ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैंने बना के रखे हैं तैयार, ठीक है, so that you can answer them and people will be able to get their doubts cleared. क्योंकि मुझे ये लगता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर वी शुड नॉट एंगेज आवर सेल्फ इन टू एनी काइंड ऑफ प्लेजरिज्म। और मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि टीचर्स 70% टाइम्स प्लेजरिज्म का शिकार होते हैं। मतलब क्योंकि उनको पता नहीं होता है क्या हो रहा है, इसलिए वो ऐसी चीजें कर देते हैं जिसको प्लेजरिज्म में डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से पता है कि रूल क्या कहते हैं, देन यू विल बी एबल टू फॉलो द रूल्स।
मेरा सजेशन ये है कि आप ये सेशंस को बहुत सीरियसली फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, get your doubts cleared, and then you can actually get into good quality of content creation without violating any rules. क्योंकि जब भी मैं सुनता हूँ ऐसे सेंटेंसेस कि अच्छा इंडियन पेपर्स में बहुत प्लेजरिज्म होता है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि वो जो 70% प्लेजरिज्म हो रहा है वो केवल इग्नोरेंस की वजह से होता है। हमारे 70% टीचर्स को पता ही नहीं है कि प्लेजरिज्म किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसलिए हम लोगों को लगता है कि हमने कोई गलती की नहीं है, वहां पे हमने रेफरेंस दे दिया, हो गया काम। ऐसे नहीं होगा। We need to understand the rules of copyright. We need to understand the rules, how to use open content, and then only we can uh, be very sure about not violating anything. So I think I will stop here right now because it is already 12:26 and you have a session at 12:30. I suggest everyone get for the water bottle somewhere nearby. थोड़ा पानी पी लीजिए. Keep yourself hydrated. It's been a long session so far. तो 1.5 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, और it is important that you take care of your health. So किसी को और क्वेश्चन है तो they can ask me. Otherwise organizers, over to you back. Sir, excuse me. Sir, I myself, Mukta Dubesharkar. I just want to ask you, sir, what happens if I am a researcher? I am not knowing that I should write that it is not copyrighted. खूप लोकांना माहीतच नाहीये सर की हे ओपन आहे हे सांगायचंय. Correct. So this is exactly the title of the session which will start at 12:30. The how to tell that I have made things open. उसके लिए एक लाइसेंस होता है. और एक एग्जांपल देता हूं मैं. आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो वहां पर एक सेंटेंस देखा होगा मॉल्स में या ऑफिसेस में, यू आर अंडर सीसीटीवी सुपरविजन. वो क्यों लिखा हुआ है? वो क्यों लिखा हुआ है? वो चोरों के लिए तो नहीं लिखेंगे ना कि उनको पता चलेगा अच्छा अगर हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे. तो क्या जरूरत है वो बताने की? चोरों को सर पकड़ना है ना. आईटी एक्ट 67 के तहत आपको बताना होता है कि हाँ, क्यों? यहाँ पे कैमरा है, आपका वीडियो करेक्ट, रिकॉर्ड हो सकता है, आपका फोटो निकाला जा सकता है. करेक्ट. अगर आपको नहीं बताया गया तो दैट इज द कंसिडर एज अ क्राइम. क्राइम, करेक्ट. और बताने से गवर्नमेंट या मॉल उस रूल के फायदे ले लेती है, जो आपका कॉपीराइट उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है. अभी अभी आपकी फोटो अगर मॉल में आ गई है तो उन्होंने वो यूज कर लिया है ऑटोमेटिकली. ओके, उन्होंने वो यूज कर लिए है. अब उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है, वो आपको बताने के बाद वो दे आर हैविंग ऑप्शन टू रिकॉर्ड इट, स्टोर इट, ठीक है, ऑन देयर हार्ड ड्राइव. अब वो किस तरह से यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे ये सारा कंसेंट में लिखा होगा, लेकिन आपने कहाँ देखा वो कंसेंट? आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एक बड़ा कंसेंट का फाइल आता है, नीचे आई एग्री आता है. हम सिर्फ आई एग्री पढ़ते हैं, ऊपर के वो 50,000 वर्ड्स पढ़ते ही नहीं है हम लोग. राइट? क्या क्या एग्री कर रहे हैं हम लोग पता नहीं है. वैसे ही आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपका वीडियो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है. लेकिन ये वाला जो कंटेंट है ये इसीलिए कॉपीराइट हमें समझ में आना चाहिए. वैसे ही और किसी का चेहरा और किसी के लिखे हुए शब्द उनकी प्रॉपर्टी है, जो हम यूज नहीं कर सकते हैं. और उनको यूज करने का सही तरीका क्या है, ये वाला अभी सेशन चालू हो जाएगा. आई थिंक हैज माधुरी ज्वाइंड? Yes, sir. I'm there. अरे वाह, ओके. वेयर आर यू? आई कांट सी यू. अभी ऑन किया वीडियो. हाँ, ओके ओके. गुड टू सी यू आफ्टर सो Good. लॉन्ग. Same here, sir. Same here. सो आपको मैं बता रहा था कि आई हैव बीन, so I'll take 1 minute of yours, Madhuri, before you start the session. So I was telling you कि I keep teaching online और मैं ऑनलाइन पढ़ाते रहता हूँ. इसमें
जब भी मेरा कोर्स ऑनलाइन जाता है, उसके बाद में कोर्स खत्म होने के बाद जो लोग उस कोर्स का एग्जाम देते हैं और जो लोग उसको पास करते हैं, उन पास किए हुए लोगों में से टॉप 10 लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए एंड डिलीवर लेक्चर्स अबाउट दीज टॉपिक्स। क्योंकि एज यू कैन सी मैं तो अकेला ये सारे सेशन नहीं ले पाऊंगा और एक ही दिन में इतने सारे सेशन के रिक्वेस्ट आ जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है। सो मैंने ये कोशिश की है कि आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर ये सारे स्पीकर जो आपने बड़ा टाइम टेबल देखा, वो सारे स्पीकर्स जो है, वो सारे स्पीकर्स इस ग्रुप का हिस्सा है जो मेरे साथ अलग अलग टाइम पे जुड़े हुए हैं एंड दे हैव बीन डूइंग दिस lecture on various topics from last 4 to 5 years. And Annapurna is also one of them who joined me. KK Roy is one of them. Everyone actually, यहाँ पे जितने लोग listed है वो सारे लोग उसी ग्रुप का हिस्सा है. And वो लोग I'll just stop and okay. ओके वो लोग स्वयं के इस कोर्स के साथ जुड़ गए थे। सो दिस तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ अनाउंसमेंट। स्वयं के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इस यहाँ पे आप डिजाइनिंग ऐसा सर्च अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक कोर्स मिल जाएगा, डिजाइनिंग लर्नर सेंट्रिक मूक्स। ये एक कोर्स है। अभी आप देख रहे हैं इसमें अराउंड 700 पीपल हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी। इफ यू इस कोर्स में एनरोल करने के बाद ये सारी टीम बन गई है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय टीम। So those of you who want to register for this course on Swayam can take a chance to just visit Swayam website and register for this course. I will also post this link before I sign off. Okay, so this is the website. यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और जो लोग मेरे बाकी कोई लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, दे कैन गो टू माय वेबसाइट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। नाउ Annapurna will explain about what is copyright and what is open source. So Annapurna, there is a lot of excitement about this session and lot of people are having questions about how do you define exactly what is copyright and what is not copyrighted. So I have just kind of started the discussion and now I know you can actually take it on from here. So over to you and over to organizers if they are there. Otherwise I will introduce Annapurna myself. बट यू मेड माई जॉब इजी सर। मैं वही सोच रही थी कहाँ से शुरू करना है, बिकॉज वी डोंट नो एट व्हाट लेवल दे आर, लाइक एकदम बेसिक बिगिनर है या फिर इंटरमीडिएट लेवल है, पता नहीं है ना। या बट अभी तो आप देखेंगे, जस्ट टेल मी ऑन दिस चैट बॉक्स आप बोल सकते हो कि आप में से कितने लोगों को अन्नपूर्णा को क्वेश्चन पूछना है। हाउ मेनी पीपल वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? So we are starting the session with only questions, is it? Will be tough for me. But this is the interesting part. We have been interacting for last 4 years through this group, and it has been a very interesting journey for all of us in this group, including KK Roy and Annapurna. Okay, so over to you. So if the organizers are Sir, 1 minute, sir. Just I want to ask last question, please. Sameer sir. हाँ बोला. सर तुम्ही ज्या
बोलला तो ऑलवेज ओपन आहे का? व्हॉट इज आता जो ओपन? कोर्स तुम्ही हा, तो ओपन आहे आता रजिस्ट्रेशन साठी. द कोर्स इज ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन राईट नाउ. राईट नाव. ओके. It will start on 20th of January. The course starting date is 20th of January. The course will end in 8 weeks from there. So around 25th of March, the course will end. And there will be a written exam of the course. The date is mentioned on the website, I think so. Yes, so you can see here start date. Is it shared or not shared? Okay. Yeah. Yeah, so this is the course. Start date is 20th January. Enrollment will end on 27th of January. Exam you have to register before 14th of February, and exam date will be 22 March. Okay, the time and the center you can choose. Sorry, time नहीं, the center you can choose कहाँ आपको exam देना है, लेकिन ये वाला part decided होता है. ठीक है. It's a 2 credit course for the postgraduate level, and it's also a AICT approved FDP. So जिनको करना है वो लोग register कर सकते हैं. Okay. Okay. Thank you. Fine. Chalo, bye. Yeah, Annapurna, you can. I'll stop sharing. So, good afternoon, everyone. Should I directly get into the topic? I'll start sharing my screen. Thank you, sir. किसी का होगा, सहायक प्राध्यापक होता है या So, as I have been listening to Sameer sir, you all were talking about licensing your content and how to go about it, why you should license your content. So, even like sir was telling about the CCTV cameras and the disclaimer that you are under surveillance and all. Similarly, when we are recording anything, you might have observed, हम बता के रिकॉर्ड करते हैं किसी को, सामने वाले का कंसेंट लेके. सो हम बेसिकली जब हम लाइसेंसिंग का बात आता है, इट्स मोर अबाउट सामने वाले का हम कंसेंट लेते हैं और सामने वाले को बताते हैं कि आपका मटेरियल हम यूज करते हैं. सो विद दैट नोट वी विल स्टार्ट. So we'll be talking about comprehensive understanding about what are all the licensing options available, and how do you whatever material you are preparing as a lecturer, as a professor, how do you license your content and share it with others. And then also in the same process, we need to empower the education content creators to make important decisions regarding sharing and protecting their content. तो ये दोनों बातों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. And with this, I will take on with the permission of the organizers and the participants. You still need time to grab a glass of water or a cup of coffee. I would not mind waiting for you for a couple of minutes. Shall I continue? Yes, ma'am. So in case I'm not audible or something, just put it in the chat box so that I know whether I'm reachable to you or not, in case there are any glitches with the internet and stuff. So getting into so you have to prepare a presentation. I think you already discussed all of this. What procedure do you usually follow? We will just go through this once again so that it will be helping you to switch from Sameer sir's session to my session.
because the switch is really required. After such a nice session with Sameer sir, you have to listen to someone like me will be difficult. I don't know. So this is a question for you. You have to prepare a presentation. You need some images for it. You also plan to show a video to your students. What procedure do you usually follow? You can write down the steps in the chat box. Or you can unmute yourself and talk as well. सो हम जनरली क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसी के लिए क्लास के लिए पीपीटी बनाना है या फिर हमको कुछ इमेजेस डाउनलोड करके दिखाना है बच्चों को या फिर हमको कोई वीडियोस बताना है तो यूजुअली क्या मेथड फॉलो करते हैं हम You can unmute yourself and talk as well. I'm also monitoring the chat. अभी तक कुछ भी आया नहीं है. Search Google. Okay. Search Google for free user, view images and all. Okay. Hello, ma'am. With the title. Yes, please go on. Yes, for videos, we can directly get the links from YouTube. Okay. So search Google, write the title and search for the images. Perfect. So this is what we generally follow. Is there anyone who does something different? So we'll go to the next slide. So generally what we do is we go to the search engines, copy paste whatever we get from there and the slides in the content, and sometimes we do mention the acknowledgement or references at the end of the presentation. Is there any other thing which we follow? So here I want to pause and based on the discussion had with Sameer sir and what you know about all of this, ask yourself whether this method which we are following, that is searching the internet, copy pasting the slides and then copy pasting the content on the slides and sometimes mentioning the acknowledgement or the so is this correct? One, am I taking away the right of somebody? Introduce the subject, AI tools, okay. We talking about whatever method we are using, is that correct? And while using this method, am I taking away the right of somebody? What do you think? आप लोग हैं ना मेरे साथ या मेरा नेटवर्क नहीं है? Hello. Yes, ma'am, you're audible. Yes, ma'am, you are audible. So मुझे डाउट आता, आप लोग कुछ बोलते नहीं है तो मुझे डाउट आता है कहीं कनेक्शन तो नहीं कट हो गया करके. Yes. Hello, ma'am. हाँ बोलिए. Can I? Yes, yes, please.
Ma'am, usually we do the same process which you have mentioned on your earlier slide, but now after listening Sahasrabudhe sir session, not just referring someone, means we are copying the content from someone's slide or web page, from wherever we are copying it, just referring or just giving credit is not enough. Now, what to do next, or what is the right method? So that question is in our mind. So we don't have answer. Means actually, I don't have answer for your question. So I'm interested to know from your side, ma'am. Yes. So I want you to think it in this way. Am I like if I make आपने कोई कंटेंट बनाया, आपने स्लाइड शेयर में अपना पीपीटी अपलोड किया, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं स्लाइड शेयर में गई, मैं आपका पूरा पीपीटी निकाल के मैंने उसको मेरे नाम से मेरे क्लास में बता दिया और फिर उसको मैंने वापस रीशेयर भी किया स्टूडेंट्स के साथ. So world is so small. Someday this PPT reaches to you with my name. Okay. आपने बनाया हुआ PPT या आपने बनाया हुआ कंटेंट मेरे नाम में आपके पास पहुंचता है through various students, through various sources. So how will we feel? Okay. Now I just want you to, I don't want the answers for this. Keep this in mind the whole time while we are talking about all of this. Right. So I noticed that you all are given some numbers. So I won't even know whom I am talking by name. So आप अच्छा रहेगा अगर आप जब बात करते हैं आपका नाम बता के बात करेंगे तो, so that at least I know you by your names. So moving ahead, we'll start with some misconceptions. हमारे दिमाग में क्या है जो सही नहीं है. So if available on the internet, it is free. सबसे बड़ा चीज ये लगता है हमको क्योंकि वो इंटरनेट में अवेलेबल है, वो फ्रीली मिलेगा. How many of you here use Instagram? You can just raise your raise your hand or put something in the chat. How many of you use Instagram? No one? Okay, yeah. So for those who are using Instagram, हम कुछ फोटो डालते हैं या वीडियो डालते हैं, पीछे से हम एक सॉन्ग भी डालते हैं उसके लिए. We add audio to it, music to it, right? So after a few months or something, you revisit that video. Sometimes this audio is unavailable करके बोलता है वो ऑडियो निकाल लेते हैं. कभी ऑब्जर्व किया? So इन केस आप इस तरह से आप कोई भी इस तरह का सिचुएशन आपने फेस किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि वो इंटरनेट में अवेलेबल है और हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डज नॉट मीन दैट वो हमको फ्रीली एक्सेसिबल. Okay. So it is a free content. It may be a content which is freely available, but not open for use. May not be open for use. It may be or may not be available for our use. So when we are not taking permission from the content creator and using the material, they might take it down whenever they want. Here's some disturbance. Can you please mute yourself? Yeah. So yeah, thank you so much. So first misconception is that we feel that internet में available है तो हम उसको निकाल के कभी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. Second one is if there is no symbol of copyright, I can use it. Copyright वो C लिख के उसके राउंड में सर्कल होता है, वो कॉपीराइट का सिंबल होता है. तो ये सिंबल नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज कर सकती हूँ क्योंकि वो मटेरियल कॉपीराइटेड नहीं है.
ऐसा करके एक हमारा मिसकंसेप्शन है। बट अगर सिंबल नहीं है तो भी वो मटेरियल कॉपीराइटेड मटेरियल है, ये यूनिवर्सली अंडरस्टूड है, राइट? नेक्स्ट, इफ आई हैव गिवन द क्रेडिट आई कैन यूज इट। सो कोई भी सिंबल नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल है और मैंने उनको क्रेडिट दे दिया है तो मैं यूज कर सकती हूँ, ये भी गलत है। उन्होंने अपना मटेरियल को कॉपीराइट करके रखा हुआ है, सिंबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी वो कॉपीराइटेड है, राइट? सो हम उनको क्रेडिट दे के यूज कर लेते हैं, ये भी मैं गलत नहीं बोलती हूँ बट सही नहीं है, it's not right. So all is fair in love, war and education, is it? And why should it be? And when we talk particularly about education, all is fair. Keep thinking about it as we move to the next slide. So एक बार I just want to know from you. I'll put up a statement. You just have to put in the chat box whether this is true or false. So if there is no copyright symbol or information on the resource, it is by default covered by full copyright. Is it true or false? You can answer, yeah, true. Only one. Okay, one more true has come. Okay, I see many trues coming in. Let's see what is the answer. And that is true. So if there is, अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी सिंबल नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट फुल कॉपीराइट कवर्ड होता है, राइट? तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, इवन क्रेडिट देने पर भी बिना परमिशन के हम यूज नहीं कर सकते। मैडम So, एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। हाँ हाँ अगर बताइए। हम उस इंफॉर्मेशन को कॉपीराइट के अंडर रजिस्टर नहीं करते तो क्या वो इंफॉर्मेशन कॉपीराइट में आएगा? आ जैसे जाएगा। कि मेरा कोई इंफॉर्मेशन है, मैंने कोई कॉपीराइट उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फिर भी तो वो कॉपीराइटेड हो जाएगा सर, ये वो कैसे बाय प्रूव डिफॉल्ट, करेंगे? हाँ हाउ बाय हाउ डिफॉल्ट कवर्ड बाय कॉपीराइट होता है। हाउ टू प्रूव दैट कि ये मेरा ही इंफॉर्मेशन है? आपके नाम से अगर आपने अपलोड किया है तो वो आपका इंफॉर्मेशन हो नहीं जाएगा। नहीं, सपोज मैंने एक पीपीटी बनाया है या फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा है और उसको पब्लिश किया है, जैसे कि ब्लॉग टाइप है, पब्लिश किया यस, और दूसरे दिन हाँ। वो कॉपी करके किसी ने सेम दूसरे दिन या सेम डे उसको पब्लिश कर दिया, तो वो कैसे बताएंगे कि हाँ ये मेरा इंफॉर्मेशन है, ये इनका नहीं है? वो भी तो बताएगा मेरा ही इंफॉर्मेशन है। हाँ और कई सारे डिफिकल्ट है वेबसाइट पे बट तो डेट आपका, एंड टाइम। हाँ जो टाइम आप पोस्ट करते हैं वो टाइम, वो जो टाइम वो पोस्ट करते हैं, बट ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। बट अगर मैंने कुछ कंटेंट मेरा वेबसाइट पे अपलोड करती हूँ तो वो बाकायदे से मेरा कंटेंट हो गया, कोई और उसको उनके नाम से करता है तो मैं जाके अभी केस डाल सकती हूँ, बट वो केस जीतूंगी कि नहीं, प्रूव करूंगी कि नहीं, कितने बार कोर्ट जाना पड़ेगा, ये सब अलग हेडेक है। ठीक है, ओके। इसलिए हम ये केयर भी नहीं करते हैं, मेनी अ टाइम्स हम ध्यान भी नहीं देते, कोई हमारा कंटेंट यूज कर रहा है तो भी हम उसको लाइट लेते हैं, मतलब वी जस्ट लीव इट, क्या ही कर सकते हैं हम बोल के छोड़ देते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसी के वजह से हमको आज ये सीसी लाइसेंसिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। माइटी राजू एक कार्टून है, और छोटा भीम, छोटा भीम के साथ भी एक माइटी राजू का कैरेक्टर है, पहले वो माइटी राजू नहीं था। हाँ तो उन्होंने उसको यूज किया, वो सेम एज माइटी राजू है। यस। तो उन्होंने बताया कि ये हमने रजिस्टर किया है कॉपीराइट में, तो पहले कॉपीराइट नहीं था उनका रजिस्टर, तो वो प्रूव नहीं कर पाए कि ये हमारा है, लेकिन उन्होंने ये वो रेफरेंस दिया कि ये सीरियल हमारा है माइटी राजू, और छोटा भीम में वही कैरेक्टर हम यूज कर, इन्होंने यूज किया, वो थर्ड सेकंड होगा कोई जो यूज कर रहा है।
तो वहां पे आपको उन्होंने स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दी है कि आपको जो भी आप कैरेक्टर है, सिंबल है, या पिक्चर्स है, या जो भी होगा वो आपको कॉपीराइट में रजिस्टर करना होगा, तभी वो तभी कर पाएंगे, आप उसको क्लेम कर पाएंगे कि हाँ ये मेरा सिंबल है, या मैंने लिखा हुआ है, या जो भी है वो कैरेक्टर है। हाँ वो तो है। सो जनरली हम लोग जो कंटेंट अगर स्लाइड शेयर में डालते हैं या अपने ब्लॉग में डालते हैं, तो वो इतना लाइक इट्स नॉट कि एक हमारा रिसर्च आर्टिकल उठा के हम वहां डाल रहे हैं। तो व्हेन इट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी important article, we generally cover it by the copyright through the journal or the publication. So many a times these rights are served, but sometimes it still happens कि हमने कुछ कंटेंट अपलोड किया, कोई और यूज कर रहा है। सो इस कंडीशन में अगर कॉपीराइट सिंबल अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम वो कॉपीराइटेड है। इट्स नॉट कि मेरा कंटेंट, बट किसी और का कंटेंट मैं इंटरनेट पे देखती हूँ, उसमें सिंबल नहीं है, तो भी वो बाय डिफॉल्ट कॉपीराइटेड है। ये मैं अपने डिसिप्लिन के लिए मुझे मालूम होना है। आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस, सो दैट आई एम इन डिसिप्लिन एंड आई एम नॉट यूजिंग encroaching upon somebody else's right. So you may ask, what if somebody else encroaches on my this thing and I am not able to prove it? We may not be able to prove it. 90% of the times we may not be able to prove it. But as academicians, we need to be displaying the discipline which we want everybody to follow. So let us not encroach upon others' rights. Let us put a full stop to this. How do we do that? We will discuss. I hope I added to whatever your thoughts are there. So moving on, it is very important to know that if there is a symbol or no symbol, that means it is copyrighted. So we'll quickly move to the next one. So इस तरह से जब copyrighted है या उसमें कोई symbol नहीं है, आप फिर भी आप use कर सकते हो only with the permission of the कंटेंट क्रिएटर। तो मैं अगर स्लाइड शेयर में ये पूरा अपलोड करती हूँ, हालांकि ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम लोगों ने सीसी लाइसेंस के अंडर में कवर किया है। सो यू कैन यूज दिस एंड यू कैन शेयर इट अलाइक। So we'll discuss all those things in future in the coming slides. But let me tell you, this presentation, when I am sharing with you, you can already use this as it is, or you can modify it and use it for your presentations further in the class or anywhere else. So this is covered with we call it a license which enables people to use it without that I already give you the permission to use it. तो हर बार आप यूज करेंगे तो हमको कॉल करके या फिर हमको ईमेल लिख के पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है। So moving ahead, so without the permission of the creator, if we are using, it is illegal, it is an offense. So we will just try to understand what kind of licenses are these. I tried to put a few examples through which we can get a better understanding of all of this. So online courses जो है, एक first scenario हम देखते हैं. I want you to read the scenario, understand, and then let me know your thoughts on this. So an online course features multimedia content which you have created. Your name is prominently displayed on the course material. Some another instructor, without proper attribution, copies and integrates the material into their own course. So is it the violation or not? And how will you feel about it? How will you think about it? Anybody who will want to share anything about this, whatever you're seeing on the screen? So you have created the course material. Somebody has used it
and integrated your material into their course without attribution, without giving you the due credit. Yes, it is a violation, of course. Anybody else feels this is not a violation? ये तो चलता है. So, morally, here when we talk, the original instructor is you in this case. Excuse me. So the original instructor is you, and you has the right of attribution and can object to this. So what best can you do is आप case तो शायद नहीं डाल पाएंगे, but at least आप उसको ऑब्जेक्ट तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मेरा मटेरियल आपने बिना मुझे बताए यूज किया हुआ है, ये करेक्ट नहीं है, बिना प्रॉपर क्रेडिट दिए यूज किया है. So these are basic scenarios which we do come across at times. So we go to the. Anybody would want to share your thoughts on this? Or can we go to the next slide? So we move on to the next scenario where there is derogatory treatment in the student project. So what is, Hello, ma'am. In this case, we can acknowledge the name of that person also, no? If you are taking some slides on or some images or some text of other person. Yes, you can definitely, you have to acknowledge. Okay, Yeah. but again, when you have put it on the internet, and I do not want to acknowledge you. आपका कंटेंट मुझे बहुत पसंद आया, मैं होती तो भी ऐसे ही बनाती. अब बना बनाया मिल गया तो मैंने ले लिया और मेरा नाम से डाल दिया. मैंने एट्रीब्यूशन नहीं दिया आपको, तो ये गलत है, मॉरली ये गलत है. सो वी आर एनक्रोचिंग अपॉन द, सो मी इन दिस केस आई एम एनक्रोचिंग अपॉन द मॉरल राइट्स ऑफ you as the original instructor of the course. This is wrong, by the way. We need to give proper credits and we need to use the content, informing the original content creator. Okay. So moving on. I hope I could clear your doubt. Yes, ma'am. Okay, thank you. So next case, let us see. So student creates a digital artwork as a part of the class project. The instructor also provides a constructive feedback to the student, but there is another student who modifies this artwork in a way that the original creator finds it offensive or damaging to their reputation. तो दो स्टूडेंट्स का बीच में ये प्रोजेक्ट, ये काम हुआ है. एक स्टूडेंट ने आपको बना के बता दिया, आपने उसको फीडबैक भी दे दिया, बट दूसरा स्टूडेंट ये फीडबैक और उनका कंटेंट लेके उसको मॉडिफाई करके ऐसे दिखाता है, और ये जो ओरिजिनल, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, उसको लगता है कि इसने मेरा काम कॉपी करके किया है. तो दैट इज ऑफेंसिव और डैमेजिंग टू देयर रेप्यूटेशन. ऐसे दिख रहा, ऐसे बता रहा है कि उसने मेरे से कॉपी किया, मैंने उससे कॉपी नहीं किया. These are the scenarios which we come across in the classroom, if not very regularly, but ये एटलीस्ट एक सेमेस्टर में एक केस तो ऐसे देखते ही हैं हम लोग. Do you agree with me? So इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? Any thoughts? If not, I'll move ahead. You can unmute yourself, or I can see something in the chat box. Users, yes. Yeah. So what happens in this case? So original student artist has the right to object to the derogatory treatment of their work. They can request the removal of the modified version, and they can tell to the teacher that this is
not right. Somebody else has used my work and made it like according to the way they want it. That is damaging my reputation. So ये जनरली होता है, हम लोग जब कोई वॉल पे बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं, या फिर when things like they do it in a group and one person can easily modifies the other without informing. Okay, so we go to the next scenario. So an academic publishes a series of lecture transcripts online. Another individual takes these experts from the transcripts, modifies them, and republishes them in a way that distorts the original meaning and intent. Hello. What do you think about this? So lecture transcript is there. You have published online. Somebody else is modifying the transcript and distorts the original meaning and intent. They turn and twist it in the way they want it and they use it. But you still know that this is originally mine and they have distorted it. Any thoughts on this? मैं बहुत बोर कर रही हूँ क्या आप लोगों को? कोई बात ही नहीं कर रहे हैं? Or am I not even audible to you? We should acknowledge the original writer, yes. So let us see what happens. So the original author has the right to object to this derogatory treatment, preserving the integrity of their. So when I see somebody else is distorting my transcript, I will go and tell them I have the right to object to this derogatory treatment and at least convey to them that please do not use my work. And you can preserve your integrity of your work and your reputation. So that's it. So open educational resources, OERs are available online. What happens in this scenario when an educator shares an open educational resource with Creative Commons license that allows adaptation? However, another user modifies the resources in a way that misinterprets the original author's views. Is this violation or not? Okay, thank you so much for this beautiful line. So, number 86. Number 60 has written why, that means yes, or you're asking a question why. तो हम एज एन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर मैंने अपना एजुकेशनल रिसोर्स जो है मैंने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में अडेप्टेशन अलाउ करके उसको इंटरनेट में अपलोड किया है. somebody else उसको मॉडिफाई करते हैं और इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं ये बोल के कि अन्नपूर्णा माधुरी ने ये बोलना चाहा है उनके फलाने एजुकेशनल रिसोर्स में. वो उनका अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करते हैं बट सोर्स मेरा कोट करेंगे और मेरा ओरिजिनल वर्क को मिस इंटरप्रेट करेंगे. तो ये कितना सही है? So the original author has the right to object to this derogatory treatment. Again, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करने का मुझे पूरा राइट है. Removal of authorship in a collaborative project. So हम 2-4 लोग मिलके कुछ बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन कोर्स पब्लिश होता है. एक कोई प्रोफेसर का नाम हम निकाल देते हैं क्योंकि हम उन लोग उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर हमको उनके साथ बन नहीं रहा है. So their name is removed from the credits. How correct is this? So when we talk about this, the removed professor has the right of attribution
and can object to the removal of their name. So generally why we are discussing all these scenarios is हम कहीं ना कहीं इस तरह के चीजों में victim हो चुके हैं. So हमारे पास क्या rights है हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसको कुछ कर भी नहीं पाए. तो हमको ऑब्जेक्ट करने का कंप्लीट राइट है और हम ये एस्केलेट कर सकते हैं, ये हम डिमांड कर सकते हैं कि इसमें मेरा भी एट्रीब्यूशन होना चाहिए. Student work in portfolio. So student creates a portfolio showcasing their academic work, including projects from various courses. The college displays the portfolio in an online showcase without crediting the student. So even this is not acceptable. अगर आपके हमारे स्टूडेंट ने कुछ काम किया है और हम उसको कॉलेज का पोर्टफोलियो में हम उसको ऑनलाइन शोकेस करते हैं, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट के नाम के साथ में ही उसको प्ले करना है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग. सो ये सब एट्रीब्यूशन राइट्स में आता है. अभी तक हम जो बात कर रहे थे, क्रेडिट देना है. हम कोई भी काम यूज कर सकते हैं किसी का भी, बट प्रॉपर क्रेडिट देना है. और बहुत ज्यादा जब हम उनके काम को क्रेडिट देते हैं, बहुत ज्यादा उनके काम में हम इंटरवीन करके उसको खराब डिस्टॉर्ट नहीं करना है. जब उनका कंटेंट यूज कर रहे हैं, उनका नाम भी दे रहे हैं, तो उस कंटेंट को बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना है. So the takeaway for this part is, it is very important to note that the extent and enforceability of moral rights can vary based on the legal jurisdiction. So legally, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. यहाँ तक कि दे टीच द स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द कॉपीराइट्स एंड स्कूल प्रोजेक्ट्स जो है बच्चों को विथ लाइसेंसेस उनको सिखाते हैं. एज लो एज 3rd to 5th स्टैंडर्ड में भी ये सिखाते हैं उनको मॉरल राइट्स, जो कि इंडिया में हमने अभी तक हमारे स्टूडेंट्स के कहीं पे भी हमने सिलेबस में ये नहीं डाला है कि अगर बच्चा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है या कोई भी पीपीटी क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको एट्रीब्यूट कैसे करना है, किसी और का मटेरियल यूज कर रहा है तो कैसे करना है. हमारे स्कूल के कॉलेज के सब बच्चे सीधा कॉपी पेस्ट काम, अभी तो इवन ये चैटबॉट्स आ गए, तो इट इज लाइक just copying from somewhere, pasting it and giving us the projects, which is not. So in US, while attribution rights are generally respected, right to object derogatory treatment is often less clearly defined and enforced. तो generally ये जहाँ पे भी attribution rights चलता है, इंडिया में बहुत कम है. तो ऑब्जेक्ट करने के लिए बहुत इवन यूएस में भी ये ऑब्जेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास नहीं है. नेवरदलेस, moral rights, it is not that somebody is violating our morality. Whether we are morally correct or not is the first question before somebody else is correct or not, before judging somebody else. So हमारे से respect शुरू होना है, respect for the creators and their work in the educational settings. It should start from me, from us, that we will not do it. If others do it, it is their problem, but at least let us not do it. Any doubts or any thoughts up to here? Hello? Use not modify. This is wrong. It's wrong to misinterpret. तुम्हारे खत में मेरा सलाम ऐसा है, ये गलत है ना. So it is against ethics. We're not talking more about ethics also here. We are just talking about the moral grounds. Morally ये गलत है. कोई हमारे साथ कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है, बट हम किसी के साथ नहीं करेंगे. This is something which we need to understand. So one more true or false. Now we have in education, we have something called the doctrine of fair use, which allows the educators to take and use any resource as long as it is
for educational purposes only. Is it true or false? Please take a moment to think and respond in the chat box. Okay, any trues coming in? So let's see. Okay, I think it is true, but there is one false and again a true. Okay, let's see what we have. So this is false. So even the doctrine of fair use, which allows the educators to use any resources as long as it is only for educational purposes, it is wrong. You cannot use anything and everything because you are using it only for educational purposes. So what part we should use, what part we cannot use, all this is very, very clearly defined in the doctrine of fair use. So what is that? Let's go ahead. So why do so given this scenario where everything is, we can use anything, it is only for educational purposes, why do we have to go away from copyright, especially in education? Okay, so this is a question which we need to think about it and then see what we can do about it. So what is this doctrine of fair use? We will see this through few examples and then we get into how do we license our content. I'm sure you all must be waiting for that कि मैडम तो इतना कुछ बता रहे हैं ये गलत है बट सही क्या है कब बताएंगे उसके लिए आएंगे हम we'll just talk about the doctrine of fair use and get into the licensing of our content. So fair use in classroom teaching एक scenario जहाँ पे a college professor includes a short excerpt from a copyrighted documentary in a lecture to illustrate a specific concept. एक कोई concept बताने के लिए हमने छोटा सा एक documentary का एक छोटा सा excerpt लेके हमने class में बताया. The use is directly related to educational objectives and only a small portion of the documentary is used. So is this called fair use? Do you think this is fair use? Okay, yes. Okay, I get 2 yeses. Somebody trying to talk? Okay. So many of you say that is yes. Let's see. So this may qualify as, and most of you, and you are by the way correct, let me tell you, this may qualify as fair use because it is for educational purposes, directly tied to the curriculum and involves a small portion. Look at this. The small portion is very important. We have only taken a small portion of the original content creators documentary and used it directly to show the educational objectives. So it is a fair use. Going to the next scenario. Fair use in online learning. An online course instructor uses an image found on internet to create a collage as a part of the lesson on art history. The use is transformative, providing commentary and analysis, but is not a substitute and is not a substitute for the original. Is this fair use? तो कोई इंटरनेट से इमेज लेके हमने एक कोलाज बनाया. ये कोलाज उस इमेज के वजह से ये कोलाज का इम्पैक्ट अच्छा हो रहा है. उसका कमेंट्री एनालिसिस सब दिया है इस प्रोफेसर ने, बट ओरिजिनल नहीं है. Fair only if taken permission or acknowledged. Right.
So let's see what we have here in store. So this may be considered as fair because it transforms the original work for educational purposes. मैंने आपका एक छोटा सा पार्ट लेके मेरा जो काम है उसको अलग तरीके से दिखाया है, उसका एनालिसिस भी बताया है, एंड ओरिजिनल वर्क से ये रिलेटेड नहीं है, ये ओरिजिनल वर्क अपना है, और ये जो हमने ओरिजिनल वर्क को यूज करके एडिशनल वर्क क्रिएट किया है, सो दिस इज समथिंग fair use only. One is in the earlier slide scenario 1, if you remember, we saw a small portion. Okay, so if you're using a very small portion of the original one to use it in your lecture or somewhere, so it is fair use. Second thing, very important, it does not compete with the market for the original image. हम जो original creator है उनका फाइनेंशियल राइट्स पे एनक्रोच नहीं कर रहे हैं. जब तक उनको फाइनेंशियल इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है इसके हमारे उनके कंटेंट को हम यूज करने के वजह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता है, तब तक इट इज फेयर यूज. ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? Okay, I'll ask you something. There is a very beautiful textbook in which one chapter you find exceptionally good and you want to give this chapter to your children. But you don't want them to buy the textbook. So what you do is you get it from the library, you take a PDF of it and you share it with your students. Okay, is this fair use or not? What do you think? Sharing a chapter of somebody else's book because it is impressive with your children. Yes, it is fair use. Few people are telling there is one no. It is fair as it is for educational purposes. Okay, very good. Now, I want you to take little time and think about this scenario in this way. आपने वो बुक मार्केट में लॉन्च किया है, वो बुक मार्केट में 200 या 300 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, बट किसी और ने उसका कोई कॉपी बना के वो अपने लिए यूज कर रहे हैं, एंड लोग आपका मार्केट में जो बुक है वो खरीद नहीं रहे हैं. Is it still fair use? See, it is a book written by you and you are losing, yes, you are losing your financial gains because somebody else is giving a Xerox copy of it or a second copy of the book is supplied into the market. So generally हम जब ऑथर्स का हमको बहुत पसंदीदा ऑथर होता है, बुक्स हम जाके सेकेंड्स में फुटपाथ पे से ले लेते हैं, तो वो उस राइटर को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम गलत ये करते हैं कि हमने अगर सेकेंड्स में ले लिया तो जो उनको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए वो मिलता नहीं है, विच इज we disrespecting the writer as a writer. So I just want you to think about all these scenarios. We still keep buying the books on seconds. Children still keep buying the books on seconds. Library से book लेके हम उसका 3-4 पेज या 1-2 chapters Xerox करके अपने पास रखते हैं instead of buying the whole book. But this is going on. This could be passed on as fair use also. But how fair it is for the person who has written the book and who has a royalty to it, right? Keep thinking about it. Keep thinking about it not as this author is somebody third person. This author could be you. How would you feel about it, right? So moving on, fair use in textbooks. So high school teacher, now these are general school scenarios. You may or you may not come across with it. We already discussed this. So a high school teacher uploads a big portion of a commercially available textbook as a PDF on the class website without permission. The textbook's content is used as a primary resource for the course.
पूरा टेक्स्ट बुक उठा के मैंने उसको अपलोड कर दिया स्कूल के वेबसाइट पे या क्लास के वेबसाइट पे। मैंने ओरिजिनल ऑथर का परमिशन भी नहीं लिया, ठीक है। और ये मेन टेक्स्ट बुक है, तो इसमें हाउ डू वी handle it? So this is key violation of fair use because it involves use of substantial portion. Small portion use नहीं कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा लाइक 4 5 6 चैप्टर्स यूज कर रहे हैं या पूरा टेक्स्ट बुक हमने अपलोड करा है एंड ओरिजिनल वर्क ये एक्चुअली कमर्शियल पर्पसेस के लिए मार्केट में था एंड उस टेक्स्ट बुक का मार्केट में जो प्रॉफिट होने का था उसको हार्म कर रहा है। तो ये इसको हम फेयर यूज नहीं बोल सकते हैं। Fair use in research. This will be little interesting for you all. Researcher includes screenshots from a copyrighted software interface in a paper discussing user experience design. The images are used to analyze and critique the design elements. Is this fair use? स्क्रीनशॉट्स किसी और का सॉफ्टवेयर इंटरफेस का लेके उसने अपना रिसर्च पेपर में डाला है, बट उस इमेजेस का उन्होंने एनालिसिस भी लिखा है और क्रिटिकल अप्रोच भी दिया है, मतलब पूरा रिसर्च करके लिखा है। सो दिस इज द फेयर यूज। सो आई गेट वन आंसर, इट इज फेयर यूज and yeah, this is fair use because it involves criticism. आपने किसी का काम के ऊपर एक्स्ट्रा कमेंट्री दिया है, उसको एनालिसिस प्रोवाइड किया है स्पेशली फॉर एकेडमिक पर्पसेस, फॉर स्कॉलरली पर्पसेस, फॉर रिसर्च पर्पसेस, and it doesn't serve as a substitute for the original software. ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के ऊपर एज अ सॉफ्टवेयर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, केवल आपका कमेंट्री एक एकेडमिक पब्लिकेशन हो रहा है। जब तक ऐसे अलग अलग पर्पसेस के लिए दोनों चीजें हैं और ओरिजिनल वर्क के ऊपर कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, तब तक इट इज अ फेयर यूज, इट इज कंसिडर्ड अ फेयर यूज। So we'll just skip Excuse forward me, this. Hello, ma'am. Yes. Yeah, Yes. this is Harris. I want to ask one doubt. Yeah, suppose there is a case study. In a case study, suppose if you are trying to teach entrepreneurship, you are teaching some industries example how they have succeeded. So we are looking at their business model. So they publish their financial statements and their achievements and what they future they want to do. So if you take that and incorporate in our teaching and presentation and share it as a syllabus reference material, so will it be fair? It is fair because you are not using it. अभी जो कंपनी ने कुछ अपलोड किया है उनका वेबसाइट पे, वो उनका पर्पसेस के लिए, लाइक उनका दिखाने के लिए या फिर उनका जो अचीवमेंट्स है वो शोकेस करने के लिए किया है, उसको आप केस स्टडी जैसे यूज कर रहे हो। ओरिजिनल वर्क को आप कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, है ना। आप उसको एज एन एनालिसिस यूज कर रहे हो, एज अ केस स्टडी यूज कर रहे हो फर्दर एनालिसिस के लिए, तो इट इज फेयर यूज ओनली। ओके, जब आप So उसको do we मॉडिफाई have to करके, acknowledge the source there? वो तो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा ना। जैसे अभी आप अब मेरे कंपनी का कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप लेते हो, तो आपने बनाया स्टैटिस्टिक्स आप नहीं क्लेम कर सकते हो ना, वो तो मेरा कंपनी का ही स्टैटिस्टिक्स है, मेरे So वेबसाइट पे ही है। suppose through ignorance or by plain laziness, if you don't acknowledge them, is there any harm in it? No. Till they will come and object it, there is no harm. मुझे पता भी नहीं चलेगा ना, है ना। बट Okay. वहां तक क्यों लेके जाना, एक एक्नॉलेजमेंट ही तो है। तो फलाने वेबसाइट से हमको मिला है, सोर्स एंड द वेबसाइट्स नेम इज डन, नो थिंग्स विल बी लिटिल मोर, लाइफ इजियर हो जाएगा। कल को अगर कभी फंसने का चांसेस है वो भी रूल आउट हो जाएगा। In a physical classroom, it's okay, but suppose we are doing it in online class and it is going to many people. So So now then see, like I am doing this session,
I don't know who is attending and who is using this material. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मेरे से डायरेक्टली मटेरियल मांग के कुछ भी कर सकते हो, मेरे ऊपर केस भी डाल सकते हो, आपको ऐसे लगता है कि ये मैडम ने चोरी करके डाला है, तो नेवर नो. The person who is saving, if he is trying to distort it for some other purposes, then it will be harmful. So better acknowledge it. It is always good to acknowledge it. Yeah. So the takeaway too from here, fair use is a legal doctrine that allows for limited use of copyrighted material without the need for permission. लिमिटेड यूज हम कर सकते हैं विदाउट, जैसे हम अभी रिसर्च पेपर्स है, जर्नल्स में से पेपर लेते हैं, हर बार ऑथर को हम थोड़ी कांटेक्ट करते हैं, हम थोड़ा सा पोर्शन उसको लेते हैं जो हमारा स्टडी को सपोर्ट करता है, उसको कोट करते हैं, उसको रेफरेंसेस में डालते हैं, साइटेशन देते हैं, उसका परमिशन का जरूरत नहीं है. दिस इज फेयर यूज. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फेयर यूज is very complex and context dependent. अभी क्या होता है, अगर कोई रिसर्च पेपर में मैंने कोर एलिमेंट उनका ले लिया, उसको डिस्टॉर्ट करा मेरे रिसर्च पेपर में और डाल दिया, तो ये गलत है. आपका रिसर्च का कोर एलिमेंट मुझे चुराना नहीं है. साइड का जो एलिमेंट्स है वो सब मैं रेफरेंसेस, साइटेशंस में सब कुछ मैं दे सकती हूँ, बट कोर एलिमेंट, लार्ज पोर्शन ऑफ योर पेपर, आपका 3/4 पेपर मैंने पूरा कॉपी किया है और लास्ट में मेरा कंक्लूजन में थोड़ा सा अलग से करके दिया है, विच इज अगेन अ वायलेशन. समटाइम्स इट हैपेंस, हम ये कोई स्टडी हुआ होता है सम अदर स्टेट में या फिर सम अदर कंट्री में, और हम वो स्टडी को हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में रेप्लिकेट करते हैं. ठीक है, रेप्लिकेट करने तक ठीक है, इसका कंक्लूजन्स और इसका स्टडी का रिजल्ट्स जो है अलग आएगा, इंटरप्रिटेशन अलग आएगा, बट हमको क्या लगता है सेम स्टडी है ना, इसका इंट्रोडक्शन उठा के हम अपने पेपर में डाल सकते हैं, या उसका साइटेशंस उठा के हमारे पेपर में उसका जो रेफरेंसेस है उसको निकाल के डाल सकते हैं, जो गलत है. ठीक है, इसको हम फेयर यूज नहीं बोल सकते. It is co-dependent and whether this particular use qualifies or not, हमको खुद को सोचना पड़ेगा कि हम ये फेयर यूज कर रहे हैं या नहीं, एंड कितना इफेक्ट होता है ओरिजिनल वर्क के ऊपर बिकॉज ऑफ वी यूजिंग देयर वर्क इन आवर एरिया. तो उस कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, उस तरह से ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है द डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर यूज. डेफिनेटली देयर इज कॉन्टेक्स्ट, देयर इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर यूज, legally accepted, we can use it, but how to use it, how much to use it is all depending on our moral approach towards somebody else's work. So moral approach check करने के लिए, अगर मेरे काम के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे कैसे लगेगा, ये एक बार हम खुद को क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो हम किसी और का काम वैसा यूज नहीं करेंगे. हमको लगता है चलता है, छोटा सा पोर्शन है ना, करने दो, तो आप भी यूज कर सकते हैं, बट हमको लगता है यार ये तो पूरा मेरा स्टडी लिख ले रहा है और सिर्फ उसका कंक्लूजन डाल रहा है, तो ये मेरे साथ वायलेशन हो रहा है. सिमिलरली हम अगर किसी के साथ करते हैं, उनके साथ भी सेम वायलेशन होता है. सो ये सबको हैंडल करने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस बनाया गया है. सो दिस वाज स्टार्टेड बाय स्टैनफोर्ड लॉ प्रोफेसर लॉरेंस लेसे. There's a very interesting story. I will not tell you the story. One, because I'm not a good storyteller. Two, because we don't have much time. So, ये concept of free and friendly free public copyright license, जो भी डिजिटल कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, they made this thing called as Creative Commons. So ये आप creativecommons.org में जाएंगे तो आपको ये लाइसेंस पूरा मिल जाएगा, जहां पे आप आपका लाइसेंस क्रिएट करके आपके काम के ऊपर लगा सकते हो. तो व्हाट आर दोज लाइसेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस इन द फर्दर थिंग्स as he is adding ideas to it. Fine. So आपने, how many of you know about Creative Commons and the different options they give? कुछ भी सुना है क्रिएटिव कॉमन्स सीसी लाइसेंस के बारे में या क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में? इफ यस, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. इफ नो, ऑल्सो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स so that accordingly I will take this further.
I get 2 no's, 3 no's. Somebody has heard about it. Okay. Number 56 has heard about it. Rest 4 say no. I get another no. Okay. So I think no's are more than the yeses. So the no's have it. So I'll just give you an overview, or I'll try to get into little bit details of what is this Creative Commons and how do we use it. So Creative Commons license जो है उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं. कोई भी कंटेंट, किसी भी कंटेंट पे आप अगर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का स्टेटमेंट देखते हो या सिंबल देखते हो, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो. आप उस मटेरियल को डाउनलोड करके अपने आर्काइव में रख सकते हो. यू कैन ओन द कॉपीज ऑफ द कंटेंट. आप एज इट इज वो मटेरियल को निकाल के आपके पास रख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. प्रिंट कॉपीज, डिजिटल कॉपीज आपके पास रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. रीयूज द रिसोर्स विदाउट एनी चेंज. एज इट इज आप अगर आपके क्लास में ये बांटना चाहते हो, आप देना चाहते हो, आप बेशक उसको कर सकते हो. रिवाइज कर सकते हो, rework on the wordings, enhance, translate into other languages. So any work which is having a Creative Commons license, you can revise this work, you can reword it without changing the meaning. You can beautify it, you can enhance it, put it in a better way. You can add your own little things to it. You can also translate it into other languages. You can remix this content with other OERs. एंड एक आपको कोर्स क्रिएट करना है, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है. सबसे छोटा छोटा पोर्शंस आप लेके पूरे को असेंबल करके आपने एक न्यू कोर्स बना दिया. ये भी कर सकते हो आप. द कंडीशन इज दैट ऑल द मटेरियल विच यू हैव गैदर्ड should have the Creative Commons license, and you can redistribute it, you can share it with anyone in the original or the altered form. So ये इतना सारा आपको फ्रीडम देता है Creative Commons license. So Creative Commons license is like the copyright only. Okay, and it is that you license your own work and share it with the people the way you want them to use it. Okay, so there are many ways you want them to use it. So what are those ways? Let us see. So इसमें underlying concepts है. First is attribution. ये सब symbols दिया हुआ है यहाँ पे. So Creative Commons, why Creative Commons? There are many other companies also which give you the which give you the freedom to adopt their licenses and put it. But why we use Creative Commons is because Creative Commons gives you the symbols. Even without reading the words, people will understand. They might know English, they might not know English, but seeing the symbols, they can easily understand. So first symbol is attribution, where you have a figure of a person, an icon of a person standing. So that means you have to attribute it. Share alike. This is an ulta C, where you are telling them that you can share the material like I have shared it, but with the same license that I am sharing it. We'll discuss this in future. Non-commercial, you are not supposed to use this content for commercial purposes. Non-derivative, that means you are not supposed to modify the content, but you can use it as it is. So these are the symbols where we have 4 concepts, but there are 6 licenses to it. The first one, you have CC written in a circle, so that is a Creative Commons license. And CC by indicates that you have to attribute this content. और कुछ करने का जरूरत नहीं है. आप इसको commercially यूज कर सकते हो, आप इसको जैसे चाहिए यूज कर सकते हो, जिनके साथ शेयर करना है शेयर कर सकते हो, कॉपीज डाउनलोड कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, रीमिक्स कर सकते हो. बट कुछ भी आप कर लो, बट एट्रीब्यूशन ओरिजिनल राइटर को देना है. सो दैट इज CC by. Is this portion clear? Any doubts with this? Any more clarifications you require? Okay, I take it as a no, and I move to the next one, where we have CC by SA. So CC by SA मतलब CC है
Creative Commons का license. By is I'm attributing. What does this say? It is share alike. Like I am sharing with, मैंने अगर शेयर अलाइक का लाइसेंस के साथ में कोई कंटेंट शेयर किया है तो आपका कंटेंट भी शेयर अलाइक का लाइसेंस के साथ ही जाएगा. आप कॉपीराइट नहीं कर सकते हो उसको. सेम लाइसेंस CC by SA के साथ ही जाएगा. ओके तो आप नेक्स्ट जो कंटेंट उसको मॉडिफाई करके रीमिक्स करके बनाते हो उस कंटेंट में भी CC by SA आना चाहिए. This is what it indicates. The next one is CC by NC. So when we call it NC means non-commercial. So copyrighted attribution, but you are not supposed to use it for commercial purposes. You have to use it only for non-commercial purposes. That is NC. Okay. Now the next license is CC by NC-SA. Can anyone try to explain this? What is CC by NC-SA? We just looked into the concepts of BY, NC and SA. So just try to like unmute yourself and we can discuss on this. Hello, ma'am. Yeah, please go ahead. It's Creative Common. You have by means you have to attribute it, and C means you cannot use for commercial purpose. It's non-commercial use. And shared alike, it means you are revising it, altering it, retaining, reusing it. So it should go with the SA, shared alike, and by. Perfect. Perfect. So thank you so much for sharing that. So we will move on to the next license, CC by ND. ND is non-derivative. Can anyone try explaining this? We looked into the concept of ND. Ma'am, may I again? Yes, please go ahead. It's Creative Common. You have by means you have to attribute it, and ND means derived. It means you have to use as it is. As it is. You cannot modify it in any way. You will have to use it as a supplement. Perfect. And then we go to CC by NC-ND. Non-commercial, non-derivative, and you have to attribute. So CC by is the least, is the one having least restrictions, but CC by NC-ND has the most restrictions. So this is almost equal to your copyrighted material where you shouldn't be using it for commercial use. You cannot alter it and use, but you have to give the credit to me. So I have permitted you to use this content. Okay, once I put the symbol on my content, it is by default that I am okay with you using my content, but you using my content will be on my terms and conditions. So these are my terms and conditions. Any doubts with this? Any further clarifications required? Any questions? If not, then I'll move ahead. So CC by, as I told you, when you have the CC by license, you can copy, publish, attribution is required, commercial use is required. You can modify and adapt and change the license. Okay, so if CC by SA is there, you can do everything, but you cannot change the license. So here it is indicated you cannot change the license. But when you have CC by ND, you cannot modify and adopt, but you can change the license. You can use it for commercial use. You have to give the attribution. You can copy and publish it. Then when it comes to the last one, CC by NC-ND, you can only copy and publish it. Attribution is required. You can change the license, but you cannot modify or adapt it, or you cannot also use it for commercial use. So this is how the CC licenses have the restrictions. So least restriction is the first one, where
there are no restrictions at all. And most restrictions are in the CC by NC&D, where you are not supposed to modify it and you're not supposed to put it into commercial use as well. So licenses with ND options are not considered open licenses as they do not follow for repurposing. So any license with ND, you cannot repurpose it. That means you cannot modify or create something new or original out of it. So these are not open licenses, especially when it comes to the last one, CC by NC&D. This is most restrictive and this is not considered open license. Rest of all are open licenses. You have CC0, which is a content in the public domain. You can use it as you require, even without giving an attribution. Okay, CC by is the least restrictive. CC by SA, NC, ND, all of that, and CC by NC&D is the most restrictive kind of a license. So, no exclusive intellectual property rights and all of this I can have. So how do you attribute? So whenever you are using somebody else's work, how have we to give the attribution? So the acronym for this is TASL or TALL. So title you have to give, name of the material. If it is not found, we'll find out an alternative for that. You have to name the author, the person or the institution that owns the material. You have to give the source, link or the hyperlink on the URL of the content. And then what kind of license is that original material giving you? Mention how the material can actually be used. Okay, so you have to, when you attribute, हम जनरली ऐसे बाय अन्नपूर्णा माधुरी लिख देंगे तो नहीं चलेगा. तो मुझे ये कौन सा टाइटल में मैंने यूज किया है, इसका ओनर कौन है, मैं हूं या मेरा इंस्टीट्यूशन होगा. देन सोर्स कहाँ से है, इसका लिंक मैंने कहाँ से इसको डाउनलोड किया है या फिर कहाँ से इंटरनेट में मुझे ये कहाँ से मिला है, और इसका लाइसेंस क्या है. मेंशन हाउ द मटेरियल कैन बी एक्चुअली यूज्ड. So moving ahead, I'll just skip all of this. Maybe I can give you the presentation slides. You can go through it and it is all self-explanatory, so not an issue. So the choice of the license which you would want to opt for your own content depends on specific goals. What are your goals and how you want to give away your content to the users. So by choosing appropriate license in the or a public domain dedication, all the creators, education, especially education content creators, can tailor the permissions and restrictions according to the preferences while contributing to the culture of open sharing and collaboration. मैं अगर कोई कंटेंट इंटरनेट में डालती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग उसको देखें, यूज करें, इसलिए मैं डालती हूँ, मैं शेयर करने के लिए डालती हूँ. कितना रिस्ट्रिक्शन मैंने देना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मैं कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट करती हूँ. So will not take the hands-on activity, but I would just want to show you how to use this website of Creative Commons. So ये जो creativecommons.org पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. आप इसके बारे में क्रिएटिव कॉमन्स क्या है, कैसे शुरू हुआ, ऑल द स्टोरी आपको यहाँ पे दिखेगा. यूट्यूब वीडियो भी रहेगा. देन लाइसेंसेस एंड टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप किस तरह से आपका काम को शेयर करना चाहते हैं. चूज अ लाइसेंस. सो दे हैव देयर चूजर विच विल हेल्प यू to decide what kind of license you will want to put for your own content. ठीक है. So get started with the chooser. मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो it will take me to the area where I want to where I will choose the license. So first question it will ask, do you know which license you need? If yes, click on yes. If no, click on no. आप दोनों में से कुछ भी, आपको अगर क्लैरिटी है तो यस पे क्लिक करिए,
No, so they will help you with, the website will help you with selecting a license. So you have to click on no and say next. So it will ask you, do you want attribution for your work? आप चाहते हैं कि लोग मेरा attribution, मुझे credit दे मेरे काम के लिए? Yes, anyone using my work must include proper attribution, or no, anyone can use my work without giving me attribution. You can select any of this. So I want people to put my name. ठीक है, तो सिर्फ एट्रीब्यूशन हम सिलेक्ट करेंगे. आप इधर देख लीजिए राइट हैंड साइड में एक लाइसेंस क्रिएट होके आ गया, CC by 4.0. Can you see this? Recommended license is given already. Yeah, I will share the PPT once I complete this. I'm definitely sharing it. Okay. So is this clear to you? And still, if you want more, click on next. It will take you to the commercial option. Do you want to allow others to use your work commercially? Yes or no? You can select. So if you select no, okay, so you select no and see the license has changed. Look at the right hand side of the screen where the license has changed now. CC by NC 4.0 करके आया है. So वही मैं अगर मैंने yes करके दूंगी तो यहाँ पे वो NC वाला ऑप्शन नहीं आएगा. Okay, so I put a no. I move ahead. Do you want to allow others to remix, adapt, or build upon your content? So do I want others to use my work, change it, modify it? So if I don't want it, I put a no and a non-derivative symbol will come here. So this becomes CC by NCND 4.0. So 4.0 is the version of the CC license which we are using. Okay, so going to next. Are you able to hear me, right? Yes, ma'am. Okay. So confirm that the license is appropriate. Now, you have derivative work, sharing requirements you have given. You have to confirm that the license is okay with you. You just copy this whole portion and put it on your work. नीचे कहीं पे आप डाल सकते हो, so that your work is licensed now and then it has to be used on these terms and conditions. So with this, I think my time is also over. We still have 10 minutes to take a few questions. I want you to just try this creativecommons.org and see if you can, if you have any questions regarding this or any doubts or any where you are getting stuck, we can resolve it in the next 10 minutes. I'll keep my screen sharing till then so that you will have a clarity on how to use it, which page to go. You can open a new tab if you're using your laptops, or if you're using your mobile also, you can open a new tab, type creativecommons.org, get into it, click on licenses and tools. It will ask you for a license chooser. Click on that and try to explore it. I'll give you a couple of minutes time. Anyone who is exploring this? I'll put the link in the chat box. This will directly take you to the license chooser page. I've shared the link in the chat box.
So I will stop sharing my screen as well. And I would like to take your feedback on the session or any suggestions or any questions you people have. You may please let me know. I will share the presentation with the organizer. I think Mr. Gaurav got in touch with me. I'll share it with him. You can take it. Yes, ma'am. Thank Thank you. you. Yeah. Any question? All participant? Thank you, ma'am. It's very informative, and I go through the websites also. Okay, you are able to look at it. It's very self-explanatory. You can try exploring it. Yeah. Thank you. Hello. Roll number 3. Thank you. I Hello, hope ma'am. it is able to reach you, and if at all still you have any doubts and things regarding it, you can always approach me. My email ID is also given in the PPT I'm going to share with you. So you can anytime approach me. Thank you so much for this opportunity, and I enjoyed a lot. I hope you all also had a good learning time. Thank you so much. Thank you. Roll number 3. Yes, Yes, start. sir. Yes, sir. Yes. Myself, Dr. Indira Usare, and roll number 3. I take this opportunity to thank Annapurna Madam for giving me an for giving us valuable information on Creative Common license and how to use license fairly and solving our queries. You have explained us all the 6 types of licenses very well under creative attributes. We definitely would love to have more sessions with you in near future. Thank you, ma'am, for solving our queries. And it was really a very informative session. Thank you, ma'am. And thanks all the participants and special thanks to Gaurav, sir. Thank you. Thank you all. Then signing off. Then sometime, some other time, some other session, let's meet. Thank you so much. Have a great day. Day to you. Yes, thank you, ma'am.